जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। यस यस नमस्ते, बोलिए प्लीज। हाँ, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार आनंद मेरा नाम है सर, और सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं सर। शहीद जगदेव स्मारक कॉलेज कुर्था अरवल मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। सर हमें सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है। काफ़ी मतलब सोशल वर्क हमने किया है। उड़ीसा में तूफान आया था 1999 में, वहाँ भी वर्क किए हैं सर। और रेल दुर्घटना राजधानी यहाँ पे हुआ था गया में 2002 में, उसमें भी रिलीफ कैंप हम लगाए थे 70 लड़के लोगों के साथ में। और काफ़ी मतलब सोशल में हमारा इंटरेस्ट है सर। और ये घूमने के लिए मतलब हम घूमते भी हैं, मतलब नया नया मतलब खोज, नया नया सीखने का हमको इंटरेस्ट है मतलब। और नेतृत्व थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया। आई थिंक रेस्ट आगे जो 2.5 घंटे 3 घंटे हम सब एक साथ घूमेंगे इन दिस लाइफ जर्नी। सो प्लीज रहिएगा सर, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू। नमस्ते सर। यस, वी मूव ऑन टू प्रोफेसर अमृता पी मैम। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। यस यस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमृता प्रेमवदा, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, SM कॉलेज, TM भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो माय प्रोफेशन एंड माय हॉबी सेम, सितार बजाती हूँ। इसके अलावा जैसा सर ने कहा, सोशल वर्क घर पे ही थोड़ा बहुत, जैसे नियर बाई मेरा गांव है, वहाँ पे मिडिल स्कूल में जाके टीचर से इंटरेक्ट करना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, ये सब अभी शुरू किया है और बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कविताएं लिखती हूँ, एक किताब भी पब्लिश हुई है। वंडरफुल मैम, वेरी क्रिएटिव, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत म्यूजिकल भी हम आपसे उम्मीद रखेंगे आगे एज वी मूव फॉरवर्ड। प्लीज रहिएगा, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर एक्सपीरियंस शेयरिंग। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके। इज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग सर, तो मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज रहिएगा मैम, वी विल हैव क्वालिटी टाइम टुगेदर। थैंक यू। वी मूव ऑन टू प्रोफेसर अनिल कुमार जी। नमस्ते सर, बोलिए प्लीज। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रघुनाथ कॉलेज परसा, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। अच्छा, और सर जैसे कि आई वाज रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, हाँ बोलिए अपने और इंटरेस्ट के बारे में लाइफ में। सर मुझे भी सोशल वर्क में और सोशल अवेयरनेस या सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है। और मेरा हॉबी सर दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना या उनके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। अभी सर थोड़ा सा एक अर्जेंट में थोड़ा ट्रैवल में हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज रहिए, बाद में व्हेनेवर यू गेट टाइम वी विल कनेक्ट। सर ठीक है, ऑडियो सुन रहा हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बी देयर प्लीज सर। थैंक यू। आई थिंक प्रोफेसर कुमार, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। वी मूव ऑन टू प्रोफेसर अरुण कुमार जी एंड देन प्रोफेसर अशोक कुमार जी। नमस्ते बोथ ऑफ यू। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर, मैं सर अरुण कुमार, डिपार्टमेंट जूलॉजी, ANS कॉलेज नवीन नगर औरंगाबाद बिहार में हूँ सर। और सर मेरा ज़्यादा खुशी लगती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करूँ और बच्चों को मोटिवेट हमेशा करते रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास करें, जो हमारे कॉलेजेज में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें भाग ले, पार्टिसिपेट करें। और जैसे हमारे NSS का है या NCC का है तो उसमें भी उन लोगों को भेजता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का अवेयरनेस के बारे में बताता हूँ। यही मेरे साथ घूमने की भी इच्छा रहती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बाद में हम सुनना पसंद करेंगे, सो काइंडली बी देयर एंड आई थिंक दैट विल बी एन ऑनर। आपसे थोड़ा जानकारी भी लेंगे। नमस्ते, प्लीज बी देयर। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अरुण कुमार जी। हम आगे बढ़ते हैं, सो वी मूव ऑन टू प्रोफेसर अशोक कुमार जी। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द सेशन। बोलिए प्लीज। Is Professor Ashok Kumar ji there, or we move on to Professor Bhavna Singh ma'am? Yes, good morning, namaskar. If I am audible to you, Professor Bhavna Singh ji. Yes sir, good morning sir. Yes, good morning, boliye please. Sir, I am Bhavna Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, RKD College, Patna. सर मेरा इंटरेस्ट बेसिकली टीचिंग है, दैट्स व्हाई आई एम इन दिस प्रोफेशन। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और सर उसके अलावा आई लव ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और नॉवेल रीडिंग भी मुझे बहुत पसंद है सर।
ओह वंडरफुल, डाइवर्स इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी आगे थोड़ा सुनना पसंद करेंगे, एंड आपका एक्सपीरियंस एंड वट एवर वे यू गाइड स्टूडेंट, वो भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे। थैंक यू, प्लीज बी देयर, एंड आई थिंक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड होपफुली विल हैव अ क्वालिटी टाइम ऑल टुगेदर। थैंक यू, प्लीज बी देयर प्रोफेसर भावना सिंह जी। वी मूव ऑन टू प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी। नमस्कार सर, वेलकम टू द सेशन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं विनोद कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। सर मैं एग्जाम कंट्रोलर भी हूँ कॉलेज का, और 2-3 इंचार्ज भी हूँ कॉलेज का। तो सर हमको बच्चों का बहुत काम देखना पड़ता है, लेकिन साथ साथ जो है टीचिंग का काम मुझे पसंद है, और वैसे सर कामों से फुर्सत नहीं मिलता है। थैंक यू सर, एंड आई थिंक एज आई एम रिक्वेस्टिंग हर किसी से हम थोड़ा सुनना पसंद करेंगे, बिकॉज द सेशन विल बी ऑन लाइफ स्किल्स एंड मेंटरिंग स्ट्रेटजीज. So as ma'am said, Bhavna ma'am, and as you are also saying, so we would love to listen to your experience, how you go about it. Thank you so much. Please रहिएगा sir, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Thank you very much sir. We move on to Dr. Sunita Kumari ma'am. Namaskar ma'am, good morning and welcome to the session. Dr. Sunita Kumari ma'am, if she is there, or else we move on to Professor Dr. Vikash. Good morning, sir. Yes, good morning, ma'am. Boliye, please. Sunita ma'am My is there. name is Sunita Kumari. I am from Department of Zoology, RKD College, Patna. Apart from teaching, मैं ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ, और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं है सर, बच्चों को पढ़ाना ये सब। अच्छा, so we will all travel together, जैसे मैं बोल रहा था. So your participation, cooperation, I'll expect as we move forward. Thank you so much, Dr. Sunita Kumari ma'am. Please रहिएगा. Thank you very much. We move on to Dr. Vikash. Good morning and namaskar, Dr. Vikash. Good morning, sir. हाँ बोलिए सर, प्लीज. गुड मॉर्निंग. मैं विकास कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग श्री शंकर कॉलेज सासाराम में पदस्थापित हूँ, और मेरा हॉबी पढ़ने और पढ़ाने में है, और ट्रेवलिंग में भी है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, हिंदी मूवी देखने, हिंदी गाने सुनने में है जी. अच्छा, आप गाते भी हैं कि सिर्फ सुनते हैं? थोड़ा बहुत बाथरूम सिंगर हैं. अच्छा, वंडरफुल. आई थिंक क्लासरूम में भी थोड़ा सिंगिंग अगर हो सके तो बाद में देखा जाएगा. थैंक यू सो मच सर. थोड़ा बॉलीवुड के बारे में भी चर्चा होगा आगे, आप रहिएगा प्लीज, एंड आई थिंक यू कैन ऐड वैल्यू. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. आई थिंक प्रोफेसर कुमार, प्लीज बी देयर. वेलकम टू द सेशन. वी मूव ऑन. थैंक यू. वी मूव ऑन टू, आई थिंक इज Dr. Amit Kumar ji or Dr. Preeti Kumari. If I am missing anybody, please tell me. Dr. Amit Kumar ji, good morning. Namaskar. नमस्कार सर. सर मैं डॉक्टर अशोक कुमार को कुछ बोल ही नहीं पाया सर. अच्छा हाँ बोलिए प्लीज. मैं बोल रहा. हाँ सॉरी सर, बोलिए प्लीज. सर मैं डॉक्टर अशोक कुमार बोध गया, SM कॉलेज बोध गया सर. मैं इतिहास विभाग में हूँ सर. अच्छा. और सोशल अवेयरनेस और मोरालिटी पे भी अच्छा काम कर रहा हूँ अपने यहाँ पे, और एक एड्स के ऊपर में सोशल अवेयरनेस ऑफ एड्स कंट्रोल पे भी एक काम कर रहा हूँ सर. उस पर किताबें चल रही हैं. अच्छा, और बहुत बढ़िया. किताब लिखी जा रही है सर. अच्छा, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया. एंड अबाउट योर सोशल वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा आगे हम आपसे जानकारी भी लेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड. थैंक यू, प्लीज रहिएगा सर. वेलकम टू द सेशन. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. नमस्कार सर. वी मूव ऑन. आई थिंक वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू डॉक्टर अमित कुमार, इफ सर इज देयर. गुड मॉर्निंग. इज डॉक्टर अमित कुमार देयर? गुड मॉर्निंग. नमस्कार सर, वेलकम टू द सेशन. नमस्कार सर, मेरा परिचय हो गया सर. अच्छा, आपका हो गया ना. अच्छा, देन वी मूव ऑन टू डॉक्टर प्रीति कुमारी, आई थिंक. अच्छा, वी मूव ऑन. हाँ बोलिए प्लीज. मैं डॉक्टर प्रीति सर, मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी हूँ, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, TTS कॉलेज, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना से हूँ सर. सर मेरी हॉबी पढ़ना लिखना तो है ही सर, साथ ही मुझे पेंटिंग करना और पुराने गाने सुनना मुझे पसंद है, 90 से पहले के गाने. अच्छा, ये सब बहुत बढ़िया. आई थिंक क्रिएटिव पर्सन इन डॉक्टर प्रीति
कुमारी, आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आगे इन द फॉर्म ऑफ रोल प्लेइंग एक्सरसाइज एज वी मूव फॉरवर्ड. Thank you so much. Please be there, ma'am, and we will love to connect with you. Thank you. We move on to Dr. Madhu Bala, ma'am. Good morning, namaskar, ma'am. Welcome to the session. Good morning, namaskar, sir. Good morning, sir. I'm Dr. Madhu Bala, the Assistant Professor, Department of Political Science, Mirza Ghalib College, Gaya, Magadh University, Bodh Gaya. Sir, इसके अलावे I am a disaster management professional for Bihar, first woman in Bihar for disaster management. I've done, my experience is 15 years. I have done serve for state. इंटरेस्ट है और फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल में थोड़ा इंटरेस्ट है तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा. ये कोर्स के दौरान एक मिसिंग पॉइंट है. रात में तो मैच होता है. ठीक है, आपका फेवरेट टीम कौन सा है? ब्राजील सर. अच्छा, ब्राजील. ठीक है, और थोड़ा फुटबॉल के बारे में भी आगे बातचीत होगा. मे नॉट बी ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड वी विल डू दैट. बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर प्रकाश. बी देयर प्लीज. नमस्कार एंड वी विल लव टू कनेक्ट विथ यू. थैंक यू सो मच. वी मूव ऑन टू आई थिंक प्रोफेसर संजीव कुमार. नमस्कार. प्रोफेसर संजीव कुमार जी. यस प्लीज. इज Professor Sanjeev Kumar ji. Yes, pranam, namaskar sir, welcome. Good morning. Good morning. Good morning. बोलिए please. सर, मैं कुमार संजीव रंजन सर. अच्छा. BMG कॉलेज दयालपुर हाजीपुर मनोविज्ञान में मैं सहायक प्राचार्य. मेरा हॉबी सर खेलना कूदना, बच्चे लोग के साथ समय बिताना और लॉन्ग ड्राइव में जाना. वंडरफुल, बहुत अच्छा, वंडरफुल. अच्छा, आज भी हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे विदाउट द कार एंड 2.5 घंटा आप सभी का कोऑपरेशन, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग. सो प्लीज रहिएगा एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा अबाउट ऑल दोस थोड़ा खेलना कूदना और लॉन्ग ड्राइव के बारे में. थैंक यू सो मच सर. नाइस मीटिंग यू प्रोफेसर कुमार संजीव जी. थैंक यू सो मच. वी मूव ऑन टू प्रोफेसर कुंदन लाल. नमस्कार. इफ सर इज हियरिंग मी. गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द सेशन. हाँ बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. नमस्कार. Good morning. I am Dr. Kundan Lal from Munger University, Munger, sir. Now presently posted at the FKR College, Barbika, and my introduction is in the words of Mukesh song, sir. आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, चांद का तारा हूँ, sir. Because it's my 5th job, sir. I have left 4 jobs, and now I am posted in my 5th job, and my life is full of multiple hobbies, sir. Actually, I am very keen in dramatics, music, and Western music, Indian classical music, sketching, drawing, as well as some games also, sir. And now I have written already 7 books, sir. And wonderful. Except my zoology, I am also interested in multiple subjects, sir. Oh, wonderful, sir. I think you are there to just help us all out whenever we feel bored. Sir, आप रहिएगा. हर किसी aspect आप is showing that you are very creative, Sure, and we will explore that. Sure, sir. Thank you, thank you. Your active participation will be required. Thank you so much. Nice meeting you. I think Dr. Kundan Lal ji. Thank you so much and welcome to the session. We move on to Professor Ansari. Namaste, sir. Good morning. बोलिए please. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. बोलिए please. मैं सर मोहम्मद नूर नबी अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, गोड्डा कॉलेज गोड्डा, अंडर सीदो कानू यूनिवर्सिटी, दुमका, झारखंड. Okay. मेरा जो हॉबी है सर वो पढ़ना, पढ़ाना और ट्रैवलिंग करना, घूमना. ये हमको बहुत अच्छा लगता है सर, घूमना. मैं जब भी मौका मिलता हूँ, मैं हिंदुस्तान के बहुत जगह पर मैं गया सर, और अभी और घूमना है. ये हमको बहुत अच्छा लगता है सर. थैंक यू सो मच. हम सब एक साथ घूमेंगे आज 2-2.5 घंटे. So please be there and your guidance will be required. Thank you so much. And once again welcome to the session. Thank you, Professor Ansari. We move on to Professor Paswan. Professor Mithilesh Paswan. Namaskar sir, welcome to the session. Is Professor Paswan there or we move on to Professor Mukesh Kumar ji? Good morning sir. Yes, बोलिए. Good morning sir. बोलिए. नमस्कार. मैं डॉक्टर मिथिलेश पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टीएस कॉलेज हिस्सा नवादा, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया सर. मेरी रुचि अच्छी सलाह देना और विशेष तौर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने में है. Wonderful. बहुत बढ़िया sir. We will look forward to your I think honest advice as we move forward in the session. Please be there. Thank you. Nice meeting you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. Thank you, Professor Paswan. Thank you very much, sir.
We move on to Professor Mukesh Kumar ji. Thank you. Please mute yourself, sir. Thank you. Yes, please. Namaskar, sir. बोलिए. Professor, I think Mukesh Kumar ji. Yes, sir. Namaste. बोलिए, please. Welcome. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. मैं मुकेश कुमार रजक, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी सीएम कॉलेज दरभंगा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सर. अभी तो मुझे अपने इंटरेस्ट के वजह से ही मैं आज ये टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और ऐसे मुझे थिंकिंग करना अच्छा लगता है, सोचना मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, जब भी हम मुझे आपको मौका देंगे आज थोड़ा सोचने के लिए. Only for 10 मिलता है seconds. तो मैं 10-20 seconds. 10-20 seconds हम आपको मौका देंगे सोचने के लिए. बाद में जब रोल प्लेइंग करेंगे थोड़ा आप रहिएगा प्लीज. And I think we will look forward to your participation. Thank you so much. I think Professor Kumar, be there please. Namaste. We move on to Professor Pankaj Roy. Yes, good morning sir. Namaskar and welcome to the session. गुड मॉर्निंग सर. मैं Good morning. पंकज राय, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में अभी कार्यरत हूँ, हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में. सर, मेरी संगीत, साहित्य, सिनेमा, कला आदि विषयों में गहरी रुचि है, और मैं इन्हीं माध्यमों से अपने मतलब अंतःकरण का विकास या अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करता हूँ, दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ. और यही है ज्ञान के असीम क्षेत्र में अगर मैं थोड़ी बहुत भी दुनिया को कुछ समझ पाया, सत्य को कुछ समझ पाया, तो मैं अपने आप को मतलब धन्य महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ. धन्यवाद सर. Thank you. Very nice. I think a way of approaching life. आपका जो विचार है, I appreciate, and आप भी रहिएगा. आपका जो creative aspect of life है, वो थोड़ा हम आगे आपसे सुनना पसंद करेंगे. Thank you and be there for the session, please. Thank you very much. I think Professor Pankaj Rai. Thank you. We move on to Professor Pavakar, and if Professor Pawan Pravakar is there, Namaskar and welcome to the session. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. बोलिए please. मैं डॉक्टर पवन कुमार प्रभाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में कार्यरत हूँ. मुझे पढ़ना लिखना और प्रेमचंद की उपन्यास पढ़ना काफी पसंद है. I think बहुत बढ़िया sir, and we will love to connect with you as we move forward. So please रहिएगा, and this is the best part of it when at one place we have a collective kind of experience, wisdom. एक जगह इतने सारे गुणीजन we are getting during the FIP, and I always feel enriched, as I was saying, when I interact with experts from all across the country in different domains. Thank you. बहुत अच्छा लगा sir आपसे सुन के, and please be there. We move on to I think Professor पुलकित कुमार मंडल. नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन. जी नमस्ते सर. मैं डॉक्टर पुलकित कुमार मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग पीवीएस कॉलेज बांका, टीएमबीयू भागलपुर. मेरी रुचि संगीत, सिनेमा, पोएट्री राइटिंग और साहित्य पढ़ने लिखने में है, और घूमना भी पसंद है, लेकिन अभी घूम नहीं पाया हूँ व्यस्तता के कारण. जब अवसर मिलेगा तो. थैंक यू सर. आप रहिएगा. एज आई वाज टेलिंग, वी विल मूव फॉरवर्ड. थैंक यू. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रोफेसर रतीश कुमार. Professor Ratish Kumar ji, good morning. Namaskar. If I am audible to you, kindly if you can come forward. Namaskar. Yes, sir. Yes, sir. I am Ratish Kumar, Department of Political Science, RSS Science College, Sitamarhi. Apart from my academic pursuits, as I was involved with a school in the outskirts of Patna for almost 2 decades. But I am at present, I am in higher education, but my heart still lies with that school with which I was closely associated at the managerial level. Principal, I worked there as principal for almost a decade. And while I was in that school, I had learned many community development programs there. I am also an avid reader of newspapers, and I am very much interested in current affairs across the world. And my specialization in my academic subject has been international relations and organization.
Thank you, sir. Thank you so much, sir. I think nobody better than you with such a rich experience, and I think I'll be enriched if I get to have a little bit experience sharing from your side. So I look forward to that. Kindly be there. आप रहिएगा please, and बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. नमस्कार sir. Thank you so much. And we move on and we go to Professor Sunil Kumar. Namaskar sir. Welcome to the session. नमस्ते सर, डॉक्टर सुनील कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। सर मेरा इंटरेस्ट है लाइफ में कुछ नया सीखना और क्रिकेट और लॉन टेनिस देखना सर। वंडरफुल वंडरफुल। सो आई थिंक स्पोर्ट्स में भी आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं एंड आई थिंक वी विल एक्सप्लोर दैट पार्ट। हम थोड़ा खेलेंगे आज, मे नॉट बी रियल स्पोर्ट्स बट थोड़ा रोल प्लेइंग गेम्स वगैरह होगा। सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू Sunil Kumar sir. Please be there. We move on to, I think, Professor Krishnan, if I got it. Namaskar, welcome to the session, madam. A very good morning, sir, and a very good morning to all dear participants and friends. I am Dr. Supriyo Krishnan. I am an assistant professor with Patna University in the Department of Personnel Management and Industrial Relations, sir. And before coming to the academics, I was working with PAC, Poorest Area Civil Society, funded by DFID UK. So I have interest in social work, and as being a teacher, I am fond of teaching and learning, sir. I want to keep myself updated about the new interventions in management. I am very much interested in writing also, sir. I have authored one book on conflict management in IT sector. That was my topic for research, PhD research also, and I have authored many research papers, sir, in national and international journals, sir. Thank you, sir. Thank you, wonderful, Professor Krishnan. आपका थोड़ा human aspect के बारे में we will love to listen. So kindly feel free and share your observation and experience as we move forward. Thank you, and nice meeting you. Thank you so much. We move on to Professor Uday Kumar. Namaste and welcome to the session, sir. जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं उदय कुमार, डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं पुराने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूं सर। I think that is a wonderful kind of interest you are having. जब आप छोटे थे, I think from that time we have a lot of friends, and because of work pressure कभी कभी हम एक दूसरे से थोड़ा detach हो जाते हैं, but that's a nice kind of a way of connecting. Thank you so much. Nice hearing that, Professor Uday Kumar ji. Please रहिएगा. We move on together. Thank you so much. I think thank you. Nice meeting you. Thank you. We move on to the last but not the least, Professor Vikash Kumar ji. Namaskar and welcome to the session, sir. Myself, Dr. Vidyarthi Vikas, working as an assistant professor of economics at ANC Institute, Patna, and my hobby is traveling and book reading. And a part of this, my hobby is to organize the seminar conferences at my institute, and also my hobby is to understand the political economy of economic development of India. Thank you so much. I think wonderful. So last but not the least, I think we had Dr. Vikas. Thank you so much, sir. You also have that skill in organizing conferences, and also I think we will get to hear from you about the challenges and how you overcome those while organizing national, international conferences, seminars and all. Thank you so much. Please be there, and I hope all of us got a chance to share a little bit. If I have missed anybody, kindly आप आगे आइए और बोलिए अगर हम किसी को मिस कर गए and we didn't get to hear any of the participant, please बोलिए, or else I think we all are ready. So I will just start the session with your kind permission, and I think as I think respected director sir was saying, the focus of the session, the first part will be about life skills. So I will request Professor Dr. Amrita Madam, ma'am, if you can kindly tell me, I'm going to share the screen. अगर आपको screen is visible, please let me know. So and then don't think टॉपिक क्या है सर? हाँ वही हम दिखा रहे हैं आपको सर। एक मिनट प्रोफेसर प्रभाकर, आप एक बार देखिए आपको देख पा रहे हैं कि नहीं। हाँ प्रोफेसर पावन प्रभाकर, आप सर एक बार देखिए, आई एम अबाउट टू शेयर। हाँ हम एक बार आपको दिखा रहे हैं, वो स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आप देखिए प्लीज। मैम आर यू सीइंग द स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
दिख रहा है हर किसी को? जी Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Please mute yourself. And with your kind permission, I think a very good morning once again to all our esteemed participants, as well as respected director, sir, Dr. Pandey, I think Deputy Director, sir, Dr. Alam, and the entire team at Patna University, HRDC. जब मैं ये स्लाइड आप सबके सामने ला रहा हूँ, आई एक्चुअली बिलीव इन इट. ऑनेस्टली मैं विश्वास करता हूँ कि रेस्पेक्ट इज लाइक अ मिरर. The more you show it to other people, the more it will reflect back on you. And I think let's try and take the session forward. Jaise I think all of us might have heard about it. Guru Dakshata ke bare mein, I think all of us have heard about it. हाँ बोलिए प्लीज. ये जो नीचे आ रहा है इसको हाइड कर दें सर प्लीज. Sure. Thank you. Is it fine? Thank you so much. Okay. I think Guru Dakshita के बारे में I think we all know as per UGC का जो guidelines है. So we are here today for this faculty induction program. And the topic for the first half of the session जो आज हम बातचीत करेंगे, थोड़ा experience sharing करेंगे, is on life skills. 2 dimensions are here in this topic. And I think the first dimension is life skills. And the दूसरा one, I think what I have found out from all the professors, हर किसी से बातचीत करने से पता चला कि many of us, if not all of us, we love our students, we love our work, and इसीलिए हम सब अपने काम से जुड़े रहते हैं, whether in the form of research or maybe थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, और apart from that घूमना फिरना, sports में भी, musics में भी, and all those things. So today we'll talk about life skills. एंड उसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस फॉर ऑल ऑफ अस. आई एम सेइंग ऑल ऑफ अस मतलब आप और हम एक साथ. सो दैट इज द फोकस ऑफ द सेशन, लाइफ स्किल्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस फॉर एकेडमिशियन इन द 21st सेंचुरी. सो आज के तारीख पे when we are talking about life skills, academician के लिए कितना important है, and उसके साथ work life balance, I think all of us are doing it really well. So आपका जो तजुर्बा है, जो experience है, I think we will try and get to hear it. So I think since I said we will make use of the feedback mechanism, I will make use of the chat option, and please एक बार मेरा message जाने के बाद you give a response kindly. Okay, sir. Okay, sir. Kindly write yes or no, और कुछ नहीं. एक सेकेंड रुक जाइए please, and just write yes or no, because once I put the question, आप थोड़ा देखिए आप देख पा रहे कि नहीं, and then tell me. I hope I have given the message. So is the topic visible and clear to you? आप सब देख चुके टॉपिक, एंड अगर आपको समझ में आया कि किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. आई एम नॉट सेइंग लेक्चर होगा, बट ये थोड़ा आई थिंक बातचीत होते रहेंगे. सो आई कैन सी द फास्टेस्ट रेस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम Professor Sunil Kumar, followed by Dr. Madhubala, and then we have Amrita ma'am, Professor Vikash Kumar, Arun Kumar sir, we have Dr. Ansari, we have Professor Ashok Kumar, we have Professor Jay Prakash, Dr. Amit Kumar ji. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका quick response पाने से, because that tells us that we all are together, हम सब एक साथ हैं. I think Professor Krishnan has given, Professor Anand has given. Thank you for that wonderful a quick kind of a response. So आगे बढ़ते हैं, and as the session is on life skills, तो थोड़ा देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है. So we move on, and this was the session, and अब ये feedback mechanism चलता रहेगा as we move forward. So let's start, and I start with this saying जो बोलते हैं कि if you can dream it, you can do it. सपना क्या है? And it is said that yes, if we can dream it, we can do it. And I really believe in a very famous saying, आप सबने सुने होंगे, देखे होंगे, which is given by our late honorable president Dr. APJ Abdul Kalam ji. उन्होंने कहा कि ड्रीम्स क्या होता है. देखिए तो ड्रीम्स is not what you see in sleep, is the thing which doesn't let you sleep, जो हमको सोने नहीं देता है. So I hope you will agree with this. Can you unmute and just give me your thoughts on this? What our honorable ex-president Dr. APJ Abdul Kalam ji had said about सपना के बारे में उन्होंने क्या कहा. So what's your take on that? आपको लगता है कि you agree, आप सहमत हैं इनसे कि आपको कुछ अलग ही विचार है? So yes,
You need to आप act for turning dreams into truth. You need अच्छा, to act. आई थिंक प्रोफेसर कृष्णन इज सेइंग समथिंग, सो उनसे पहले सुन लेते हैं. थैंक यू. देन वी मूव ऑन टू a few of our participants about this. Yes, Professor Krishnan, बोलिए please. Sir, the line means, as far as my understanding goes, that we need to act. We need to follow our dreams for turning into truth. Not merely thinking and keeping it in our mind is enough. Thank you, thank you. बहुत अच्छा लगा listening to that observation. I think we have Professor Arun Kumar sir, if sir wants to say something, or Professor Ansari, if you have anything to share, please. आपको क्या लगा इस विचार के बारे में? What is your take? और जो सपना मैंने देखा उसे पूरा करने के लिए दिन रात लगन रखनी होगी. तब तक जगते रहना, तब तक वो मेरा सपना पूरा न हो जाए. यही हम लोग कर. Thank you, Dr. Arun Kumar ji, for that. We have Professor Dr. Madhubala ma'am with us. Ma'am, what's your take on this, your experience? यस सर, एग्जैक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, जो ये थॉट आपने दिखाया हमारे लेट प्रेसिडेंट का, तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो एक सपनों का होना जरूरी है. किसी के भी जिंदगी में सपनों का होना जरूरी है. वो एक लक्ष्य होता है, और जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, उस टारगेट को अचीव ना कर लें, तब तक हम चैन से ना बैठे. Thank you. Very well said. And I think hopefully those who saw the last slide, जिसने देखा है, we all will agree, or maybe even if we don't agree, we will have our own views on that. Yes, I think there is a hand raised for Professor Pravakar sir. Yes, please sir, बोलिए please. बोलिए please. सपने तो सब लोग देखते हैं सर, लेकिन जो सपने को पूरे करने के लिए काम करते हैं उन्हीं का सपना पूरा होता है. बहुत बढ़िया, एकदम सही है. एंड आई थिंक विद दिस आइडिया, विद दिस काइंड ऑफ अ थॉट, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट दे गेट द राइट गाइडेंस. थैंक यू. यस, डॉक्टर प्रीति कुमारी मैम, आपको कुछ कहना है ऑन दिस, इफ यू हैव एनी थॉट्स? जी सर, इसका तो सिंपल सा है सर, कि सपने अगर देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए दिलो जान से एकदम लग जाना है, जब तक वो पूरा ना हो. यही है सर. थैंक यू. आई थिंक ऑलरेडी आप सपने पूरे कर चुके हैं, और आगे भी बहुत कुछ है जो आप करना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट विल बी वंडरफुल. यस, प्रोफेसर, आई थिंक Ratish Kumar hand is up. Sir, बोलिए please. Sir, I think yes, I was expecting your observation and experience hearing. बोलिए please, sir. So my childhood dream was to become a teacher in a college or university, but for a long time I worked, as I earlier told you, sir, more than 2 decades in a school. But I kept my dream alive, and maybe in the distant horizon, but it was there alive. And finally, at the fag end of my career, I have few years left for my retirement. I am in higher education. So it goes to prove that if you keep your dream alive, you will get it. You will get it. Thank you. I think we have a live example हमारे सामने. I think sir is there, Ratish Kumar sir, and I think sir that talks about your attitude, your personality, and I think your level of motivation. इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे. So I think please feel free and share. बहुत अच्छा लगा looking at your views. I think yes. Anybody else? Professor, a hand is up from yes, Dr. Shuman Kumar and Professor Anand also. Yes, Professor Anand, बोलिए please sir. सर आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. प्रोफेसर आनंद, यस नाउ, यस बोलिए प्लीज. सर, सपना ही मेन जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है. अगर सपना अगर जिस व्यक्ति में अगर नहीं हो, उसका जीवन मृत के समान है सर. हमने कई सपने देखे जीवन में, और आज असिस्टेंट प्रोफेसर उसका मेन हमारे लाइफ में जो ये है सर, कि आज अचीव किए यहाँ पे हैं. तो बचपन में हम बहुत, जब हम सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, तब हमने सोचा था सर कि काश हम भी मतलब पढ़ाते, और हम भी मतलब लोगों को, छात्र को मतलब जो है क्लास लेते. और आज मतलब बड़ा खुशी हो रहा है सर कि इस पर बात हो रही है सर, और मतलब मुझको विषय रखने का एक मौका मिला है सर.
बहुत बढ़िया सर, आपको तो खुशी हो रहा है और आपसे जुड़े जो लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा शायद खुशी मिल रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। आपका फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपका स्टूडेंट्स हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बहुत अच्छा लगा सर, एंड आई थिंक दैट इज रियल आई थिंक सपना। थैंक यू सो मच। इज एनीबडी एल्स रेजिंग देयर हैंड? काइंडली अनम्यूट कीजिए और बोलिए। यस डॉक्टर कुमार बोलिए प्लीज, डॉक्टर सुमन कुमार सर सर बोलिए। मेरा जो एम्पिरिकल सर स्टडी रहा वो 3D इम्पोर्टेंट था मेरे लाइफ में सर। फर्स्ट आई हैव टू डिजायर, है ना, हमने ख्वाब देखा। उसके प्रति डिजर्विंग बनने के लिए सर डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो 3D इज इम्पोर्टेंट इन माय व्यू। Absolutely, sir. Absolutely. And I will request all of our esteemed participants, हो सके तो please appreciate all of us together by raising your hands. हम तो इधर और कुछ नहीं कर सकते. We can show our genuine appreciation. अपना हाथ ऊपर करने का बटन please click कीजिए, because whoever is sharing, I think whether it's Dr. Kumar or maybe Dr. Ratish Kumar or even I think Professor Pravakar, or whether it was Professor Krishnan, anybody for that matter, I think Professor Madhubala, Dr. Madhubala ji, Professor Arun Kumar. So each one of us, we need to move together, and I think हर किसी का एक सपना होता है, and some of those we already touched it. There are a new dreams which we have. आगे भी हम उसको पूरा करेंगे, and I think that's the best part of it. Thank you so much, and I think as we move forward, I can see a lot of hands are up, and those who are in a position to raise your hands, and if you are listening, आप अगर सुन पा रहे आपका जो कलीग्स है, जो आपका सीनियर है, जूनियर है, उनका विचार और उनका भावना, आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट दैट। नाइस टू सी सो मेनी हैंड्स आर अप इन रियल टाइम। प्लीज लोअर इट, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन ऑल्सो वी विल एक्सपेक्ट यू टू काइंडली कनेक्ट एंड टेक पार्ट। सो एज वी मूव फॉरवर्ड, सपना क्या है, कैसे उसको अचीव करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो वी सॉ इट। सो लेट्स मूव ऑन, एंड आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर पुलकित मंडल सर, आप कुछ कहने वाले थे सर, बोलिए प्लीज। जी सर, सपनों हाँ, के बोलिए। बारे में यही कहूंगा कि आशा ही है जीवन अपना, इसकी सुखद प्राप्ति है एक सपना। एकदम सही। आई थिंक रियली इट्स वेरी मीनिंगफुल, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। ये एक सपना है, उसका पूरा करने से। एकदम सही, एकदम सही। थैंक यू सर। आप एक बार देख के बोलिए कि नेक्स्ट स्लाइड इज विजिबल और नॉट। हाँ, आई एम जस्ट शेयरिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार काइंडली जस्ट हैव अ लुक एंड वी मूव फॉरवर्ड। I hope it is visible to you, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। Okay, fine. So I think we were talking about this. The next slide, I hope if we check, I will have a question for all of you. आपको ये question का आंसर अपने हिसाब से देना है। There is no right or wrong answer. सही गलत नहीं है। ये हमारा क्या बोलते हैं, जीवन का जो नजरिया है, उस हिसाब से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। My question is, do we live for years, months or days? ये सेशन इज ऑन लाइफ स्किल्स, सो लाइफ स्किल्स के बारे में चर्चा हो रहा है। सो आपको क्या लगता है, डू वी लिव फॉर इयर्स, मंथ्स और डेज? सो लेट मी ट्राई एंड गेट अ क्विक आंसर। आपको अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि आपका क्या विचार है। डू वी लिव फॉर इयर्स, डेज और मंथ्स? So kindly, Professor Kundan Lal sir is having something to share. Yes sir, बोलिए please. Only days sir. आज में जीना है, आज में जीना, और आज अपने सपने को साकार करते हुए जीना है। Absolutely, very good. कल किसने देखा है? Absolutely right. Yes, please feel free. कुंदन लाल sir's view हमने सुना। Yes, Professor, और कोई है जो अपना विचार आगे लाना चाहता है? Please feel free. It can be your own life. हाँ, बोलिए। मैं गिरजेश सिंह सर। हाँ, बोलिए सर। मेरा कहना है कि सपना तो सब कोई देखता है, लेकिन सपना देखने के पीछे संसाधन होना चाहिए। संसाधन नहीं है तो सपना पूरा नहीं हो सकता। एकदम सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात कही है। आई थिंक प्रोफेसर गिरजेश सिंह सर, थैंक यू फॉर दैट। सर मैं वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ सर। हाँ हाँ, यस बोलिए प्लीज। संसाधन जब आप करने की ठान लेते हैं तो संसाधन ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं से आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है दशरथ मांझी, एक हथौड़ा और एक छेनी ले करके पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया। उसके पास एब्सोल्युटली आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ में शक्ति होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स आवर ऑब्जर्वेशन। लाइफ में हम कैसे देखते हैं, डू वी लिव फॉर इयर्स, डू वी लिव फॉर मंथ्स और
we take every day at a time. एक दिन पकड़ के हम जीते हैं. So it will vary from people to people. May I interrupt, sir? हाँ, बोलिए please sir. Sir, I have seen a dream to establish a world-class laboratory in Bihar, and I know I have no resource, but still I have this belief in me that within 5 years or 10 years, I will establish it with the help of people, with the help of donation of people. So I can shape my dreams without any resources, with my ego and self-respect, sir. Absolutely. I think we keep on having different observation. I'll just request you to kindly check the next slide. भावना सिंह जी मैम, आपको कुछ कहना है मैम, बोलिए प्लीज. जी सर, मुझे लगता है कि जीवन तो सर हर एक वो पल है, हर एक सेकंड है सर, उसे जीना चाहिए. और वो सेकंड मिलके सर वो एक साल भी बन सकता है, वर्ष भी बन सकता है सर, बहुत सारे ईयर्स भी बन सकते हैं. तो मुझे लगता है हर एक वो सेकंड ही जिंदगी है. Yes, I think we got an answer in the chat box from Amrita ma'am, and if you can unmute ma'am, अगर आप unmute कर सकती हैं तो kindly just share your thoughts. That is also another views. Yes, yes. So, बोलिए please. भावना मैम कह रही थी, I was doing the same. हर पल, every moment is life. आप ही का बात लेते हैं मैम, और टेल मी इफ द स्लाइड इज विजिबल. आपका बात आगे ले जाते हैं, देखते हैं कि स्लाइड आपको दिखता है कि नहीं. काइंडली जस्ट कंफर्म. आई होप यू आर सीइंग द स्लाइड. यस सर. ओके, सो माय क्वेश्चन वाज, ये हमारा देखने का नजरिया है. डू वी लिव फॉर इयर्स, मंथ्स और डेज, और आई थिंक वी लिव फॉर special moments. I think already we got that answer from some of us also. So इसी के ऊपर, okay, so इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, and I will request, there might be many, मुझे पता है बहुत सारे moments होंगे. हाँ, so I think when we talk about it, I will request all of you, आप थोड़ा सोच लीजिए for 30 seconds, and अगर आपको कुछ memorable moments आपके life का है जो you want to share in brief, so I think we can get to hear it. Not just official, I'm saying beyond academics, beyond your regular course of work. इसको छोड़ के भी I think जीवन में ऐसा कुछ memorable है, whether it's getting your first job हो सकता है, having a baby born in the family हो सकता है, or maybe completing your research and awarded PhD, कुछ भी हो सकता है beyond your normal life. So I will request in the chat box, just briefly, पहले एक बार wait कर लीजिए, and then kindly just share it, and or else you can talk about it. एक बार लिख देते हैं उधर chat box में. So any memorable moment, I am requesting you, अगर आपको लगता है कि कुछ है आप बोलना चाहेंगे, write yes or no if you can't remember, and then you can share about it. आप उसके बारे में बोल सकते हैं. Anything जो आपको लगता है कि as of now life में आपका कुछ memorable moment आप उसको कहना चाहेंगे. So I think anything, it can be your first job, it can be maybe getting PhD awarded, seeing your scholars getting awarded, कुछ भी हो सकता है life में. Yes, I can see Professor Bhavna is already saying yes. Professor Pravakar has said yes. Dr. Madhubala ma'am has said yes. Feel free. आप लिखना नहीं है उधर, फिर भी आप बोल सकते हैं. Just write yes if you can recall anything. Let's start with Professor Bhavna Singh ji. Yes ma'am, बोलिए please. Yes sir. Sir, मैं बहुत देर से बोलने का कोशिश कर रही थी सर. मैं 2-3 बात बोलना चाहूँगी. पहली बात सर ड्रीम्स के ऊपर. सर ड्रीम्स तो सर सब कोई, मतलब मोस्टली लोग देख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो बेसिकली जानते ही नहीं है कि हमें ड्रीम्स भी देखना है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हम शायद ये अचीव कर सकते हैं, तो उन लोग को ड्रीम्स दिखाना भी एक सर खुद में बहुत, मुझे लगता है कि बड़ा काम है जो हमें करना चाहिए बेसिकली. और सेकेंड थिंग सर अबाउट द लाइफ की, लाइफ इज अकॉर्डिंग टू मी इज अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड बीइंग हैप्पी. It's only about being happy. What gives you satisfaction, do only that, act only that, speak only that. It should not hurt others as well, according to me sir. और sir third sir, बहुत छोटा सा इंसिडेंस है सर. एक बार मेरे भाई, मतलब वो बहुत कम एक्सप्रेस करता है सर. आई हैव अ यंगर ब्रदर, प्रेजेंटली ही इज इन US. वो बहुत कम एक्सप्रेस करता है सर. तो बिफोर माई मैरिज he had given me a card, a sister card, and he has written a very small message, and I remember that message till date sir. So this is a very special moment, single moment, but it is a lifetime moment sir.
true, very true, and I think wonderful. At one go, आपने 3 points रख दिए, which are very true for your life and very valid. Thank you for that wonderful sharing from your life. Thank you very much. आगे हम आपसे भी और जानकारी लेंगे. So we move on to I think Professor Pravakar has something to say. Professor Pavan Pravakar, yes sir, बोलिए. सर मैंने 2 बार सर पूरे मनोयोग से तैयारी करके सर लेक्चरशिप नेट का एग्जाम दिया सर, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ. जिस बार मैंने सोचा सर पास नहीं करूंगा, उस बार मेरा सर JRF हो गया सर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो इससे क्या कंक्लूजन आता है सर? इससे आपको क्या लगता है? हम उस बार होपफुल भी नहीं थे कि इस बार मैं पास करूंगा. मतलब एक्सपीरियंस का एक महत्व होता है ना. ट्वाइस यू हैव गिवन एंड देन थर्ड टाइम आई थिंक यू आर मोर एक्सपीरियंस. थैंक यू वंडरफुल. और वी मूव ऑन टू डॉक्टर मधुबाला मैम. यस मैम, बोलिए प्लीज. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं तो ये कहूँगी, मैंने तो सपनों के बारे में कह ही दिया, और जैसा कि भावना मैम कहती हैं कि बच्चों को भी सपने दिखाना नहीं, उसे कैसे पूरा करना है वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, जवाबदेही है. अबाउट लाइफ में अगर सर का परमिशन हो तो मैं बोलूँगी. इसमें मैं कोट करना चाहूँगी, कीप लविंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग. हेवन इज चीयरिंग यू ऑन टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर. खुश रहो, खुश रहने दो. मैंने ये अपनी बेटी से सीखा है सर. जब भी उसको मैं अक्सर उसको सुनती हूँ, वो कहती है खुश रहो और खुश रहने दो. तुम दुखी रहोगी तो मैं भी दुखी रहूंगी. और सर जहाँ तक वो एक गोल्डन वो जो मोमेंट की बात आपने कही, तो मुझे जब गोल्ड मेडल मिला, मैं पढ़ती थी, मैंने वो किया, मैंने डबल MA किया सर इन रूरल स्टडीज, रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी. फर्स्ट बैच में जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो सचमुच वो मेरे लिए अविस्मरणीय, मैं कहूँगी अतुलनीय, और मतलब वो मेरे लिए सचमुच सरप्राइजिंग था. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. थैंक यू, बहुत बढ़िया. आई थिंक these are actually the moments लाइफ में जिसके लिए हम actually we are living. So that is wonderful. I think all our good wishes. Yes, I think there are many of us who have lot of memorable moments. आपको अगर लगता है कि आप कुछ शेयर करना पसंद करेंगे, if it is not too personal, you are most welcome sir. बोलिए. I think yes, प्रोफेसर पासवान आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बोलिए. जी हाँ, मुझे कुछ कहना सर. हाँ बोलिए. मैं एक तो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है सर, और बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं सर आज के सेशन में. ऑल बिकॉज ऑफ योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. आगे भी हम बहुत कुछ जानकारी लेंगे. प्लीज बी देयर. थैंक यू सो मच सर. सपनों के बारे में जैसा कि आपने कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का एक कथन है, बहुत महान कथन है कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते. मैं उसी के साथ एक महान कवि पास को जोड़ना चाहूँगा, जो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. सपने हमेशा होने चाहिए जीवन में. सपने होंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, जैसा नहीं कहा कि कब जीना चाहिए, आपने दूसरा सवाल था, कहूँगा कि हमें आज में ही जीना चाहिए. बिल्कुल आज में ही जीना चाहिए, लेकिन हमारे सामने हमारे सपने होने चाहिए जो हमें आगे हमारे कार्य योजना को हमें दिशा निर्देशित करते रहे कि हमें किस दिशा में जीना है, किधर जीना है. और आज के इस बहुत ही अच्छे सेशन में मैं अपना एक पर्सनल, बिल्कुल ही पर्सनल जो हमारा आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ. आज मेरे जीवन का बहुत ही खुशी का दिन है. मेरी शादी की आज प्रथम सालगिरह है सर. ओह वंडरफुल. बहुत बहुत मुबारकबाद. बहुत बधाई. बहुत बधाई. वंडरफुल वंडरफुल. ऑल आवर गुड विशेस. बधाई मुबारक. Wonderful. I think both of you, all the best for your new innings. एक साल हो गया. Keep batting together. Some of you are interested in sports, cricket, so long-term partnership चलता रहे. So I think that's all our good wishes. Thank you so much. We move on. Thank you, sir. रहिए please. We will connect with you. Yes, Professor. I think Anand has raised hand. Amarendra Anand sir, आपको कुछ कहना है? बोलिए. Professor Mandal is also there. बोलिए please. ये सर दो हमारा जीवन में सर ये मेमोरेंडम ये रहा सर, मेमोरी रहा सर. एक तो हम 2005 में थाईलैंड गए थे, और थाईलैंड जब गए तो वहाँ पर कई तरह का क्लास हमको दिया गया सोशल मूवमेंट के, और कई क्लास लेना पड़ा. कई तरह का एक मतलब जो है एक टॉपिक को मतलब कई तरह से प्रेजेंट करना रहता था.
एक्टिंग से और ड्राइंग से और एक्शन से और फिर स्पीच से, ऐसे कर करके था। और बहुत कुछ सीखने का हमको मौका मिला। वो आज जब हम सपना देखे थे कि थाईलैंड हमको जाना है, बड़ा खुशी हुआ था सर। वहां गए तो जीवन बदल दिया गया एकदम, मतलब अच्छा, लगा सही, एकदम सही। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर। एंड आई थिंक वंडरफुल, एवरी डे वी लर्न, एंड आई थिंक दैट्स द स्पिरिट कमिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर लिसनिंग टू दैट एक्सपीरियंस। वी मूव ऑन टू प्रोफेसर मंडल सर, इफ you are sharing something. Yes, Professor Yes, sir. Pulkit sir. I want to say our life is full of particle time, and related with us whole time is our life. हमसे संबंधित सारे समय ही जीवन है, और छोटे छोटे समय से भरा हुआ है हमारा जीवन। Right, absolutely true. I think little moments of life, which is all life, all about beauty of life. Both acha vichar, I think wonderful. So we are moving ahead, and I think it's so nice of you that आप सब अपना विचार सामने ला रहे हैं, and that is the best part of it. With this thought, with this kind of idea, we are actually every day meeting our students. उनको हम सही मार्गदर्शन कर रहे हैं. Thank you very much. I think yes, Professor Kumar, आपको कुछ कहना है about some memorable moments of your life, Professor Arun Kumar जी sir? मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना हो गई थी सर। पहले मैं हाजीपुर में था, तो एक स्टूडेंट आए और कहा सर मैं पीछे गंडक नदी में डूब कर मर जाऊं। तो दो स्टाफ थे, बोले क्या हुई? बोले सर हमारी दीदी भी पास कर जाती है, हमारी छोटी बहन साथ में वो भी पास कर जाती है। मैट्रिक की मैं बात करें, सेकेंडरी की सर। तो मैंने कहा कि अभी तक आपने किसके लिए पढ़ा? मम्मी कहती जाकर डूब मरो। बोले नहीं नहीं, किसके? मम्मी के लिए, पापा के लिए। बस बाबू इस बार सिर्फ आप अपने लिए पढ़े। सर ये गजब सी बात। जब वो रिजल्ट लेके वो मेरे पास आए, मैंने सभी मार्क्स में डिस्टिंक्शन मार्क्स है। बोले सर ये रिजल्ट आपका, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आप रख। इसके मम्मी पापा भी आए। मैंने क्या सर, वैसा मोमेंट मैं कभी जीवन में देख नहीं पाऊंगा सर, लगा सर। थैंक यू सर। Wonderful. I think इसीलिए we are all in this noble profession. Thank you so much. I think Professor Arun Kumar ji for that sharing of incident. And I think these are little moments of life जिसके लिए we all are in this academic scenario. Thank you. We move on, and I will request sir आप देख के बोलिए. Yes, anyone else sharing something, or else we go to the next part, and then I think you'll also have a lot of things to share. आपको बहुत कुछ कहना होगा उस स्लाइड के ऊपर. I'll ask you about that. एक बार देख के बोलिए सर आपको दिख रहा है कि नहीं. I'm sharing the screen once again. Professor Arun Kumar sir, आप देखिए next slide if it is visible to you. एक सेकंड. जी सर, विजिबल है सर. हाँ ठीक है, थैंक यू. ओके फाइन. सो आई थिंक एज वी मूव ऑन, आई थिंक मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इज यू सी लाइफ इज अ स्टोरी इन अ पॉजिटिव सेंस. मतलब वी हैव हर्ड लॉट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ. किसी का मे बी अबाउट making our family a little bit of proud, making maybe touching the life of our students, कुछ भी हो सकता है. And I think when we talk about it, let's try and talk about it. Success and failure हर किसी के जीवन के साथ जुड़ा रहता है. And I think I'll request you kindly just check the chat box and now if I ask you, there are many stories of success and failure. So I will request you in the chat box एक बार आप देखिए और once I give a request आप थोड़ा yes or no लिखिएगा. Kindly wait for my message in the chat box. So just write yes or no in the chat box. I have requested you. Is there any shortcut to success? Please आप अगर आपको पता है सो आपको लगता है कि सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए कुछ शॉर्टकट अप्रोच होगा, सो प्लीज राइट यस. इफ अगर लगता है कि नहीं है तो आप थोड़ा अपना विचार डाल सकते हैं. सो आई कैन सी लॉट ऑफ आवर एस्टीम्ड प्रोफेसर्स, they are giving their thoughts about success. Is there any shortcut to success? So let me check the answers. I think Professor Amrita has said no. Professor Krishnan has said never. But a difference of opinion from Professor Ashok Kumar sir. आपके विचार भी सुनेंगे सर. I think we have Professor Preeti Kumari ma'am saying no. Professor Anand is saying no. And I think Professor Sanjeev Kumar, Professor Vikash Kumar, Dr.
Professor Pandey, they are saying no. Professor Bhavna Singh ma'am is also saying no. Kindly give your views in the chat box. अगर आप देख पा रहे हैं कि is there any shortcut to success? I think please write yes or no, and then we will hear. Yes, I think we will first hear sir's view. Professor Ashok Kumar sir, once again, sir, आपका क्या विचार है? Success सफलता के लिए कुछ shortcut approach हो सकता है? नहीं सर, सफलता किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट मेथड तो है ही नहीं। अगर आप शॉर्टकट मेथड से जाते हैं तो वो सीमित सफलता, अगर मिलती भी है तो सीमित सफलता होगी। क्यों? इसलिए कि अगर आप कहीं नौकरी में चले जाते हैं और आप उसमें स्किल्ड है नहीं और ये आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो वैसी स्थिति में आपको जो वहाँ पे वर्क्स है वो कर नहीं पाएंगे और किसी से आपको सहयोग लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप वहाँ हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए वो आप सही तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए शॉर्टकट सफलता वो कभी भी डेंजरस होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक दैट्स व्हाई इन द चैट बॉक्स आई सॉ यस। मैंने सोचा कि कुछ अलग ही आप बोल रहे थे, बट आई थिंक वी एग्री नो, there is no shortcut to success. And I think the answer from all the esteemed professors is on the negative, which is also a positive. I think whether it's Amrita ma'am, whether it's Professor Krishnan, Professor Dr. Preeti Kumari ma'am, Professor Anand, everybody has said a no. So अगर आपको लगता है, हम सबको लगता है कि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, so I will request Professor Ansari to share his views. Sir, आपको भी वही लगता है कि there is no shortcut for success? शॉर्टकट जो होता है वो बेटर नहीं है हमारे लिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमको मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है, तब फिर जाकर के कहीं हमको सफलता प्राप्त होती है, मिलती है। शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे तो ये तत्काल कुछ हो सकता है, लेकिन परमानेंट जो कामयाबी एक होती है वो नहीं मिल पाएगी सर, ये मेरा सोच है। एकदम सही विचार सर। एक बार देखिए स्लाइड को एंड देन इफ वी एग्री, इफ इट इज विजिबल, हमको लगता है हर किसी को कि शॉर्टकट इज नॉट द राइट वे टू अचीव सक्सेस। सो वी हैव अ सिंपल स्लाइड। डिफरेंट व्यू सर, आई हैव सम डिफरेंट व्यू। यस यस सॉरी सर, बोलिए प्लीज सर, एक सेकंड। यस सर, प्लीज कैरी ऑन। Sir, actually, I have seen a lot of examples in our state. They have achieved the success by achieving their shortcut methods. Like I'm not going to, सर मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, बट मैंने देखा है यहाँ पे कि कई लोग जो किसी जमाने में बहुत ही बुरा काम, रैंसम वसूली का काम किया करते थे, आज उनके 6 बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स खोल रखे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। So I have written one book sir, the economy of the good economy of black money. उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है सर कि बिहार में खास करके और यूपी वगैरह में या जो भी पूंजी निर्माण हुआ है सर, वो ब्लैक मनी के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो ब्लैक मनी जो भी कमाए शॉर्टकट से कमाए, और ऑल्दो दे हैव गॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ। Thank you for that first-hand experience. I hope everybody heard what Professor Kundan Lal sir said. And on this, mera ek one thing I want to share. How is or what is the definition of success? If we talk about material benefit, that is the definition of success. Or maybe if we talk about andar ka jo satisfaction or maybe contentment, that is your definition of success. So I think that is little bit a point of view, and I think sir is absolutely right. Sir has written a book from his observation, which are real. But how do we look at success individually? और students को जब हम बोलेंगे मार्गदर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? So उसके ऊपर I will request you to kindly confirm. अगर Dr. Madhubala ma'am is watching, ma'am, kindly confirm if the next slide is visible to you. So talking about the extreme case and maybe the experiences, what sir said is absolutely true. But अगर success हम students को बोलेंगे तो उसका way forward. Yeah, thank you. So when we talk about success and failure, जीवन में सफलता और व्यर्थता और उसका रास्ता कैसा होता है? I think more often than not, how is the road to success? आप अपना जीवन का experience अगर आप देखेंगे, sir was saying जब आप बचपन में थे, sir was dreaming to be a professor in a reputed university or higher education system. Then I think sir was also talking about regarding the dream of being in the higher education system jab aap school mein the for over 2 decades. I think those are a definition of success, how you look at it. So rasta kaisa tha? Was it very smooth, very easy?
I think the answer is the road to success is always almost under construction. And ये रास्ता हर दिन हर मोमेंट पे तैयार करना पड़ता है. And I think our next destination, whenever हम students को guide करते हैं whatever for their research, for their regular kind of a course or life के लिए, I think we have to tell them the road to success is almost always under construction. कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? Is it going to be done by somebody else? I think sir told us one incident जहाँ sir ने एक students को बोला था, भाई किसके लिए आप पढ़ रहे थे? आपका माता पिता कोई और, आप खुद के लिए पढ़िए. So that is who is going to create the road for this success. The answer is, I think we are going to be the creator of our own destiny. So I think every students जब हम उनको mentoring करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, so we have to have this kind of a mindset that we are going to be the creator of our own destiny. And when we talk about success and failure, since आप सभी ने in a positive sense you have said no mostly, so I think we have a simple way forward for a success. अगर आप देखेंगे in a clockwise manner, घड़ी के तरह अगर आप देखेंगे, it starts with hard work. And when we talk about hard work, I think कोई क्यों इतना hard work करेगा? The only answer is for improvement. So if you want to improve, आपको hard work करना है. There should be a focus. एक focus होना चाहिए, and अंदर से एक passion भी होना चाहिए. So this is, if you go forward, I think there should be a push. अंदर से एक motivation push होना चाहिए. Somebody has kindly unmuted. Please mute yourself. Thank you. I think noise आ रहा है. Kindly just please mute yourself. Thank you. We talk about एक push होना चाहिए अंदर से, and that push will help us to serve others. So their service motive should be there if you want to achieve success. And जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ideas. आपका जो ideas है, sir was saying going to Thailand and getting new ways of taking a session by maybe with gestures, with little bit of acting, or maybe other ways. So that is the ideas which will help us to try and solve problems. और अंत में क्या होगा? We all maybe at times have to go through, हर किसी को we have to go through criticism, we have to go through rejection. And I think those have already into research, so आपने देखे होंगे कि when you are doing the review, so you give lot of suggestions to the authors, और maybe जब हम हमारा पेपर भेजते हैं कहीं, we get feedback from the editors and the reviewers, so हमको बोला जाता है कि थोड़ा ये करिए, otherwise we have to upgrade it. So this is a simple I think kind of a way forward for success. I hope you all will agree with this. On this, I think if you have anything to share, you are most welcome to talk about it, because जी मेरा एक कहना है, आत्मबल और आत्मविचार हमें सफल बनाते हैं. एकदम सही. I think yes sir, बोलिए please. आत्मबल और आत्मविचार ही हमें सफल बनाते हैं सर. एकदम सही, बहुत बढ़िया. I think same point is said by Professor, I think Krishnan. Yes, Professor Krishnan, you have something to share? बोलिए please. No sir, I was just acknowledging कुंदन लाल सर ने जो कहा कि शॉर्टकट होता है सक्सेस का, कि they are now very well off and they are running their business बहुत लार्ज स्केल पे. सर तो स्केल सक्सेसफुल जो आपने कहा कि पैरामीटर क्या है सक्सेस का, तो सक्सेसफुल वो हर मामले में सोशल एक्सेप्टेंस है, पीस ऑफ माइंड है, हमारा ड्रीम जब ट्रू हो गया, ये सारी चीजें दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस. तो मे बी ऑन वन फ्रंट दे आर सक्सेसफुल की पैसे की कमी नहीं है, दे हैव इन्फ्लुएंस, कोर्सिव पावर उनके पास है, लेकिन रेफरेंट पावर उनके पास नहीं है सर. पीपल आर नॉट इम्प्रेस्ड विद देम. For no one they can be role models, because everyone is knowing how come they have been successful, they have reached this pedestal of success in their life. Absolutely. Thank you. I think सबसे जो best part है what sir said, I think Professor Kundan Lal ji, sir will also probably be the role model for a lot of students and people around, because sir hopefully will take the different route. उनके सामने जो है, yes please. Sir, actually, I have again a different example, sir, about Sasi Duya and Ravi Duya. Everybody know well about Sasi Duya and Ravi Duya. Sir, सबसे पहले वो स्मगलर थे, everybody knows, and still they own the SR Limited. They are well reputed, with well reputation, well money, well wealth, everything they have, sir. So, if social acceptance is not here,
then why we are accepting some leaders? Why are we are accepting the Supriyo and Xavier like entrepreneurs? Why, sir? Again, sir, one line, sir. सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी. Absolutely, I think wonderful, sir. I think your experience is actually taking the session forward. Thank you so much. I think Professor Amrita P. ma'am has something to share. Ma'am, boliye please. Thank you. Boliye please, sir. Ma'am. Just wanted to say on Kundan sir only कि पैरामीटर जो है वो हम सबका सक्सेस के लिए अलग अलग होता है. मे बी XYZ जो सर ने बताया उनके लिए पैसा कमाना was being successful. मेरे लिए वो नहीं है. मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज बीइंग सक्सेसफुल. मेरे लिए टेकिंग केयर ऑफ माय होम एंड माय सोसाइटी इज बीइंग सक्सेसफुल. सो इट डिपेंड्स ऑन अस. हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता है जब पैसे नहीं आते हैं, परेशानी होती है तो फ्रस्ट्रेशन होता है और ऐसे लोगों के लिए गुस्सा आता है. बट एट द एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल इन माय आईज. This is what I wanted to share. Thank you. I think on a happy note we move on to the next slide. एक बार देख लीजिए, इसके ऊपर जरूर चर्चा होगा. थोड़ा माफ करेंगे, एक्चुअली क्या सर के डिबेट में थोड़ा उल्टा बोलने वाला भी चाहिए ना, इसलिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ. बट नहीं, नो डिबेट सर. We all are in the same सर उल्टा podium. मत बोलिए सर all are in the same podium. डायरेक्शन में चला जाएगा. आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही. मुझे भी कुंदन सर के मुझे भी एक बात से ऑब्जेक्शन है कि बिहार में, नॉट ओनली बिहार, अभी तो पूरे देश में संकट अकाल चल रहा है. पूरे विश्व की बात करें, हम वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, नॉट ओनली बिहार. सर यू आर फ्रॉम बिहार, सो प्लीज डोंट ब्लेम ओनली फॉर बिहार. अच्छा ठीक है. आई थिंक ऑल इन अ गुड स्पिरिट. ग्लोबल बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन. एब्सोल्युटली मैम. हम सब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. शायद आपका विचार कहीं I think we will have some kind of a unanimous opinion. एक बार देखते हैं, चलिए. And I will request कुंदन सर एक बार देखिए तो, and we'll start with you. आप देख के बोलिए whether the next slide is visible to you or not. ठीक है, एक बार I'll just present the entire slide to you, and on a positive note we'll move on. So yes, so we were here, and slide is visible, sir. Yes, thank you. But I am asking about the next slide. So please give your views on this. I'm saying falling in love is easy, but staying in love requires work. So आपको क्या लगता है? So on this, so falling in love is easy, staying in love requires work, और कुछ अलग लगता है? So on this, I will request you to please raise your hands, and then we will invite you to kindly. I'm totally agree with you, sir. I'm totally agree with you, sir. Because, sir, I have one incident in my life. In 1996, sir, when I was a student, sir. Actually, I went to Jamia Millia Islamia for youth festival there, sir. And there I find actually, I have first love with music. But I am not very much educated in the music field, sir. There I found 28 universities. Their representatives came with the full degree of music, either music lisanas or something else. I have no degree in music. But my love is music. I got first prize there, but sir, to stay with my love is very stressful. And जब मैंने पढ़ाई की सोची तो मैंने म्यूजिक छोड़ दिया सर. तो प्यार का निभा नहीं पाया सर. प्यार तो किया, निभा नहीं पाया सर म्यूजिक के साथ. I think wonderful. I think very rightly said with the appropriate example, and I think that is true love when we talk about it. I will request you all to please raise your hands when I request you, and then give your views in it in the chat box. What is your take when I say falling in love is easy, but staying in it takes little bit of work? So I am putting it in the chat box, and आपको लगता है हाँ या ना, आप जवाब दे सकते हैं chat box में please, and then you can raise your hand. आपका भी थोड़ा विचार सुनेंगे, आपका ideas, आपका तजुर्बा जो experience है वो हम सुनना पसंद करेंगे. Check the chat box पहले. Falling in love is easy, but staying in it requires some kind of a work. One say for this, sir. हाँ बोलिए please sir. प्यार करना तुझे मेरा एक जुर्म था, भूल जाना तुझे दूसरा जुर्म है, बेवसी जुर्म है, हौसला जुर्म है. Okay, wonderful. I think कहीं ना कहीं अभी भी म्यूजिक आपसे जुड़ा है लाइफ में. I hope and that is shown. I think wonderful. भूलता नहीं ना. हाँ, that is there. Yes, that is there. Wonderful. Okay, so I think yes. मेरा यही कहना है सर, प्रेम की डगर बड़ी कठिन है सर. हाँ सही, एकदम सही. Okay, yes. So when we are talking about it, honestly, I think kindly check the chat box, and आप अपना yes or no डाल सकते हैं, and then you can kindly just
raise your hand. I think Professor Paswan is raising the hand. Professor Krishnan is also there. Yes, Professor Paswan, please, बोलिए. Or maybe the hand is still up. आप chat box में पहले डालिए and then आपको क्या लगता है on the slide? If the slide is visible to you, आपको दिखाई दिया. We are talking about falling in love is easy and then staying in it requires work. So उस हिसाब से अगर आपको आपका कुछ experience share करना है, so we can talk about it. Yes, Professor. I think Amrita ma'am or maybe Professor Ashok Kumar sir is also visible. अगर sir को कुछ कहना है, sir बोलिए please. Professor Amrita ma'am, from your experience, what you have to say? सर मैं ये कहना चाह रहा था. हेलो. हाँ बोलिए सर. यस प्रोफेसर अशोक कुमार बोल रहे थे. बोलिए. ये कहना चाह रहा था क्योंकि वो समय नहीं मिल पाया था कि सपने देखने चाहिए. निश्चित रूप से सपने के अनुरूप उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उसके अनुकूल संसाधन और दोस्तों को इकट्ठा करना चाहिए और उसमें लगना चाहिए तब तक जब तक ऐसा लगता है कि उदाहरण के स्वरूप पानी में जब डूबने लगे और डूब करके जब निकलते हैं बचने लगे तो लगता है ऐसा कि तो बच गए. इस स्तर तक का मेहनत और साधनों के साथ उद्देश्यपूर्ण कार्य करना वो लक्ष्य की 100% प्राप्ति हो ही जाती है. इसमें कोई दो राय नहीं. और एकदम सही. और अंत में अभी हम जो बातचीत कर रहे थे सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है अबाउट फॉलिंग इन लव इज इजी? इसमें तो ये सारे विचार सर लोगों ने, कुंदर सर और बाकी सारे लोगों ने कहा ही है कि लव प्यार करना बहुत ही आसान है, निभाना बहुत ही मुश्किल होता है. बहुत सारे लोग तो ये लव करते हैं. लव तो बहुत इजी शब्द है, लेकिन उसके साथ निभाना, जैसे सर ने कहा कि म्यूजिक साथ मेरा अफेयर था या मेरा लव था और उसको मैं निभा नहीं पाया और इस क्षेत्र में चलाया. कदाचित ये सत्य है. ऐसा बहुत बिरले ही होता है जो लव भी करता है और सक्सेसफुल उसके साथ लग करके लव को पूर्ण करता है. I think wonderful, very well said by Professor Ashok Kumar ji on both the aspects. And then I think we have Professor Ansari had something in the chat box. Sir, बोलिए आपका विचार क्या है about that? Yes, please, sir. मेरा मानना है सर कि लव यकीनन जो है वो इजी है, आसान तो है ही, लेकिन अब क्या है कि जब आप उसमें चले गए तो अब वो थोड़ा टफ हो जाता है और उसको निभाना वो ज्यादा प्रॉब्लम है. लव करने से ज्यादा प्रॉब्लम है उसको निभाना. ये मेरा मानना है सर. Thank you very much. And I think we were expecting an answer from Dr. Amrita ma'am. Yes, ma'am, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए प्लीज. सर थोड़ा सा नजरिया का फर्क है सर. मुझे तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि हाँ आई हैव फॉलन इन लव. कई बार यही समझ में नहीं आता है और जिंदगी निकल जाती है कि हमारा एक्चुअली प्यार क्या है. ये वी डोंट नो. वी कीप ऑन लिविंग आवर लाइव्स. अब वो कैसे जीते हैं बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्यार के, या जस्ट जिंदगी जीते चले जाते हैं. तो फर्स्ट वी शुड नो, yes, we have fallen in love for something, and then we have to, of course, work hard to maintain it and to get it. Thank you for that. I think both अच्छा लगा. Ma'am is having a different take on that. Yes, thank you so much. I think Dr. Madhuwala ma'am is there. I think we have Professor Krishnan also. Yes, ma'am. First, Dr. Madhuwala ma'am, बोलिए please. सर इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सर जो हम पढ़ते भी आए हैं साहित्य में, और मीरा और कृष्ण का प्यार. अगर हम प्यार की बात करते हैं, प्रेम और प्यार पे अभी हम नहीं जाएंगे, जैसे जेंडर और सेक्स पे हम नहीं जाएंगे वैसे तो. और बहुत लोगों ने ये कहा कि प्यार करना तो आसान है लेकिन उसको निभाना मुश्किल होता है. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हम उस चुनौती को, जैसा कि भी हम कह रहे थे कि सक्सेस बहुत आसान नहीं है, उसके लिए हमें काफी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है. तो अगर हमने प्यार किया है और हम अगर उन चुनौतियों को, उन कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहते हैं विथ फुल डेडिकेशन, तो उसे प्राप्त किया जा सकता है. मैं अपने पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ सर. मैंने प्यार किया और निभाया. 8 साल बाद हम लोगों की शादी हुई, और बिहार में खास करके उस जमाने में, आज से 25 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इंटरकास्ट मैरिज इज वेरी डिफिकल्ट. आज भी ये है, बट अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है. तो
आप उन चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। अगर हम आसान तरीके से जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, सब कुछ फिर हम बहुत कुछ, जैसे कि मैं अमृता मैम से भी सहमत हूँ कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने प्यार किया, या समय वो निकल जाता है, या किया तो किससे किया। बट इन पर्सनल लाइफ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं ये कहती हूँ पूरे दावे के साथ कि मैंने प्यार किया और मैंने निभाया भी और निभा रही हूँ सर। Hats off to you, ma'am. I think wonderful, and that is a spirit. I think we appreciate that. Wonderful, very well said, all of you. और हम एक्चुअली जो कह रहे थे, आई थिंक द नेक्स्ट स्लाइड विल टॉक अबाउट इट, जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी हम देखते हैं कि दे कम अप विद समथिंग, दे आर वेरी एक्साइटेड। कभी कभी वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि वी आर गोइंग टू डू रिसर्च ऑन अ टॉपिक, और वी आर गोइंग टू गो एंड वर्क इन दिस सेक्टर, ये वो हम एक ऐसा क्रिएटिव कुछ सोचा है। सो दैट्स वेरी नॉर्मल, बट आई थिंक दैट इज लाइक फॉलिंग इन लव। बट उसके साथ हर दिन हर वक्त रहना और मे बी निभाना, जो आप बोले लाइफ के तरह, that also is true. I think we move on with that and go to the next slide, in which context actually I put it up. So I'll request if we can get a confirmation from Professor Krishnan. Ma'am, आप अगर देख के बोलेंगे कि if the next slide is visible to you kindly, that will be nice. एक बार देख लीजिए please. I hope it will be visible to you about Yes, that falling in love well, slide. Yeah, I hope is it visible, ma'am? yes, falling in love. Yeah, That one fine. is Okay, it is now when I'm well talking about falling in love is easy, I think I have another thing for all of you to have a look. I think this comes from a stalwart by the name Steve Jobs. I think hopefully हम सब ने उनका नाम सुना होगा. He's saying the only way to do great work is to love what you do. And I think I have already got it from you. जे आप बहुत खुश है in this noble profession, because you said you love to be in the teaching profession. आपको पढ़ना पढ़ाना, स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहना, सोशल वर्क करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है. सो वट एवर वी आर अप टू, जो भी हम करना चाहते हैं, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट लव, आई डिडंट ओनली मीन अबाउट एनी इंडिविजुअल. मैं किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में सिर्फ नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि अपना काम से भी ऑल्सो वी हैव टू हैव दैट लव, वी हैव टू हैव पैशन. व्हाट आई थिंक रेस्पेक्टेड कुंदन लाल सर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, जो म्यूजिक के साथ उनका जो सब काइंड ऑफ लव, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. जो अगर आपको कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है, आई थिंक वी कीप ऑन टेलिंग आवर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी यही कहते होंगे कि भाई अगर कुछ अच्छा करना है सो वी हैव टू कनेक्ट विद इट. लव मतलब वी हैव टू लिव विद इट. जैसे मैम टोल्ड अबाउट निभाना, मतलब हर दिन हर वक्त वी हैव टू बी इन दैट, वेदर इट्स सिलेक्टिंग अ कोर्स और मे बी गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, internship, जो भी है आज in the higher education system, and maybe doing your PhD or even going for some higher order research, UGC projects, जो भी हम करते हैं, I think we have to be in love with it, and I think that is what is important in today's context, and I hope we all will agree on this. If not, then also I love to hear you. So my next question in the chat box for all of you, my question, first, I will just request all of you to kindly just check the chat box and then answer. My question is, sorry, it will be a typo error. Do we love what we do? Kindly just check the chat box and please let me know. Do we love what we do? I will request you for a yes no answer, or maybe something you can write different. आपको क्या लगता है, आपको जो आप कर रहे हैं हर दिन, whatever we are doing, do we really love what we are doing? And I think the fastest response as of now comes from Professor Amrita ma'am. Professor, yes, Professor Kundan Lal sir has saying always a creative take. Yes, but in some different way. We will get to hear you, sir. Please don't worry. I hope we are not bothering you, sir. Kundan Lal sir, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना आज? So I hope fine. Thank you so much, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया, sir. We'll hear you. I think Dr. Priti Kumari ma'am is saying yes. Professor Kumar, Dr. Madhubala ma'am is saying yes. I think kindly just check the chat box, and I think Ratish sir is also there. Sir, आपको क्या लगता है, sir? If you share your thoughts on this. Sir is enjoying, loving every moment of it.
Professor Ratish Kumar sir. It's absolutely true. Unless you do not love what you are doing, it does not make any sense. It's absolutely true, sir. Thank you so much. And I think that's kind of a majority of us, those who are in a position to give a response. We are saying yes. We would love to listen to Professor maybe Arun Kumar sir, if sir has something to share. Boliye sir, please. Thank you. मुझे पसंद है सो जिस जॉब में जो मैं कर रहा हूँ मुझे पूरा पसंद है, क्योंकि सर सबसे पहले मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। जब मैं अपने आप से प्यार करूँगा तभी मैं कुछ अच्छे सपने देखूंगा और उसे पूरा करने के लिए कुछ मैं काम करने होंगे, और जो मैं कर रहा हूँ तो मेरा टीचिंग जो मुझे पसंद है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और इसी बात पे मेरा दूसरा जो क्वेश्चन होगा, आई थिंक I will request all of you, because this is like a yes no kind of a question. How important is trust in life? मेरा ये एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, बिकॉज हाउ इम्पोर्टेंट इज ट्रस्ट इन लाइफ? जीवन में ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? सो इसके लिए आपको जो लगता है फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, यू कैन राइट यस इट इज इम्पोर्टेंट, नो, मे बी, वट एवर, जो भी आंसर आपको पता है आप जो लगता है लिखिए. आई एम पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स, हर किसी के लिए इन द चैट बॉक्स. I think on this there is no ifs and buts from Kundan sir. I think sir has said 100%. ठीक है sir, thank you very much for that. Amrita ma'am has said very important. I hope my voice is reaching everybody. आप सभी सुन पा रहे हैं और देख भी सकते हैं chat box. So kindly just give your views so that I can call out your name in that way. I think yes, Dr. Madhuwala ma'am has said very important. Dr. Preeti Kumari ma'am is saying important. Bhavna ma'am is saying very important. Arun sir has said important, most important. A lot of people, those who are giving. Bhavna ma'am, आपको क्या लगता है about this point? You said it's very important. If you are in a position to unmute, Dr. Bhavna Singh ma'am, you have said. हाँ बोलिए. Trust is important. यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर. किसी भी स्टेज पे मेरी लाइफ, मतलब मेरे हिसाब से सर, किसी भी स्टेज पे सर, एनी रिलेशनशिप, आइदर अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप और husband wife relationship, father daughter relationship, mother student relationship, every relationship is based on trust sir. Unless we will trust someone, we can't recognize them na in a proper way, we can't honor them in proper way. तो सर ट्रस्ट तो सर बिल्डिंग मस्ट है सर, हर जगह सर मस्ट है सर. इफ यू आर टेलिंग समथिंग एंड आई विल नॉट ट्रस्ट, हाउ विल आई गेट द आइडिया सर? So sir, here also trust is important. Okay, thank you so much. I think ma'am has brought all the dimension. It's between the husband and wife, between a family member, or where we all are, between a teacher and a student. So I think I have been boring you for almost an hour so. एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इसके ऊपर. आई होप यू विल नॉट माइंड ना. एक छोटा सा 10-20 सेकेंड का छोटा सा क्लिपिंग देखेंगे. आई थिंक विल दैट बी फाइन? ट्रस्ट के ऊपर. ओके फाइन, अच्छा ठीक है. सो आई विल रिक्वेस्ट भावना मैम, एक बार काइंडली जस्ट चेक अगर आप ऑडियो सुन पा रहे हैं और वीडियो भी देख सकते हैं कि नहीं. आई एम जस्ट प्लेइंग द वीडियो फॉर यू. हाँ, एक बार काइंडली जस्ट चेक. आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन वंस अगेन और एक छोटा वीडियो देखेंगे. अच्छा, सम ऑफ अस माइट मिस आउट ऑन दैट, तो एक बार पूछ लेते हैं. दोज हु आर इन अ पोजीशन टू रेज योर हैंड, प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार कि we are interested in watching a small video by raising our hands, so that if you are near your device, नहीं तो छोटा सा वीडियो, एक funny video है in a different context, but it also talks about trust and transparency, maybe in a different dimension. But I think yes, some hands are going up. I can see Dr. Paswan is there. I think yes, Professor Vikash Kumar, Chok Kumar, Arun Kumar sir, Bhavna ma'am is already visible, Kundan sir is always there. I think Professor Anand is there, Amrita ma'am is there, Dr. Preeti Kumari ma'am, Ratish sir is there, Sunil Kumar sir. Wonderful. So I hope it would be nice if we get a few of you also to respond. I think yes, Professor Pravakar might be also there. Hopefully Professor Pankaj Roy sir might be also there. So kindly just check if our hand raise option is working. अगर आप एक छोटा सा वीडियो देखना चाहेंगे, और only for 10 seconds. So I'll just share the screen with you.
So just भावना मैम एक बार कंफर्म कीजिए. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू एंड एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे. Otherwise, I think you will say that it is becoming very boring. So थोड़ा move करते हैं आगे and so here comes the video for you. I hope you'll be able to see it. मैम आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. watch it, please. Okay, sir. Wait. There's something I want to tell you. Minus 2. Even I have something to tell you. Huh? Lasting relationships are based on transparency, like what Geojit BNB Paribas shares with 4.5 lakh customers. Benefit from transparency. I believe you all got to see the video. आपको शायद दिखाई दिया. So kindly just check the chat box. Yes, sir. So did we enjoy the video? आपको शायद देखने से पता चल गया कि trust, transparency कितना important is, if not between family members or in life, but I think not between only teachers and students, but we all are consumers and we buy different products. So whether it's a biscuit, whether it's a mobile, whether it's a insurance, कुछ भी. So there comes a company and I think आप शायद किसी को पता होगा about this. So they are talking about कि हम अपने customer के साथ कितना trusting relationship, transparency maintain करते हैं. So on this note, I think is it the right time to have a short break? आपको क्या लगता है 5-10 मिनट का break देने से it will be nice. So kindly let me know and then we rejoin. I don't mind, but आप बोलिए आप क्या पसंद करते हैं? 5-10 minutes. 10 मिनट सर, 10 मिनट का दिया जाए. अच्छा ठीक है. So it's around 12:10 according to my clock. So by 12:20 we all will be back. So so I am writing we rejoin at 12:20. I think so we all I am not leaving the session, I'm just putting myself into mute. So we rejoin at 12:20. So kindly just write a yes or no and then I think we take it forward. सर मेरा कहना था कि इतनी अच्छी मोहब्बत में ब्रेक क्यों सर? I think वही बहुत अच्छा है सर. आप आपके वे ऑफ लेक्चर पर प्यार हो गया सर. अब इस मोहब्बत में ब्रेक डाल के खल डाल रहे हो. अरे सर आप रहेंगे तो इट विल फ्लो स्मूथली. आई थिंक मेरा हिंदी तो आपको पता है कितना है बेहतर. सो आई एम लर्निंग एवरी मोमेंट. सो प्लीज बी देयर ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट ऑनर आप सबसे जुड़ते हुए. थैंक यू. आई जस्ट म्यूट माय सेल्फ एंड टर्न ऑफ द कैमरा. 12:20 हम वापस आते हैं. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बी देयर प्लीज. थैंक यू. कुंदन सर की शायरी भी जरूर सुनेंगे हम लोग. हाँ जरूर सुनेंगे. गाना मूड में आ गए कुंदन सर. बहुत सुनेंगे हम लोग. बस चले तो मैं इस साल 2023 में अपने प्यार का साक्षात्कार भी करने वाला हूँ. आफ्टर 15 इयर्स मैं एक स्टेज शो करने वाला हूँ. मोस्ट वेलकम अगर आ सकती हैं तो. आएंगे हम लोग आएंगे सर. जब आएंगे सर सिर्फ एक बार वो जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर. बिल्कुल मैम. गजल मेरा बहुत बड़ा इश्क रहा हुआ है. वो आपकी आवाज से ही लगता है सर. आपको देख पता चलता है सर. आपकी आशिकी दिखती है सर. जिंदगी में हर चीज में आशिकी है मैडम. हर काम से आशिकी है. खुद सबसे बड़ी आशिकी है. आशिकी बहुत जरूरी है. सपनों के साथ साथ आशिकी तो जरूरी है ही. तभी तो मैंने कहा मैडम कि आवारा हूँ. हमेशा आवारा ही रहना चाहता हूँ. सर से जॉब छोड़ना अगर आवारा गर्दी है तो मैंने भी 3 जॉब छोड़ा है सर. लेकिन मैं नए तरह के जॉब प्रोफाइल में जो आवारगी में मजा हो कहीं नहीं. आपने महसूस किया होगा मैडम. जी सर. बट वो अच्छा है सर. अच्छा है.
Good afternoon once again, all of you, and welcome back. I hope we all are back. Kindly check the chat box and please write a yes if you are back. Please do it fast. Yes, I am expecting a quick response in the chat box. I hope everybody is back. Some of us were already there, I believe. Yes, I can see quick responses coming from Dr. Preeti Kumari ma'am, Arun Kumar, Professor Arun Kumar sir is there, Dr. Suman Kumar, thank you, Amrita ma'am, Kundan sir is always there, thank you, I think wonderful. Rest of us, I hope we are all back. Yes, Professor Vikash Kumar sir is also there. Thank you so much. So we move forward, and I think Dr. Preeti Kumari ma'am, kindly just एक बार confirm कीजिए. I think before having the short break, we were here. The slide that we were talking about, we all love what we do. So I think that slide is visible to you, and we figured out about how important is trust and transparency in our life. ये वाला slide आपको शायद you are viewing जी it. जी Okay, thank जी you. सर So I think since we came I from a love my break, job. thank you. So I hope some of are interested in sports and all. So we will have a small game. So I will request you, because जीवन also एक खेल होता है. So we will try and play it together. Since we came back from a great break and हम सबको थोड़ा दोबारा rejoin किया है. So we will एक बार हम सब एक game role playing exercise करेंगे. So I will request you please make use of the chat option. Just a second, give me a minute. सिंपल सा गेम होगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको देखना है और आई विल गाइड यू क्या करना है. पहले देखते हैं हाउ मेनी ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग अ स्मॉल गेम. एक स्लाइड आएगा, उस स्लाइड में एक पिक्चर रहेगा. सो आप थोड़ा चैट ऑप्शन देखिए प्लीज. I am requesting you, are we ready to play a game, irrespective of our discipline, whether we are from any discipline, whether social science, history, maybe Urdu, kuch bhi ho, I think economics, international business, disaster management, whatever be the discipline, it will not matter. So I am requesting you, are we ready to play a game? Already I am getting a few responses. आपको सिर्फ yes or no लिखना है. क्या करना है? I'll brief you. आपको क्या करना है? एक पिक्चर आएगा स्क्रीन पे, आपको देख के उधर लिखना है ये क्या दिखाई दिया आपको. आई होप आपको समझ में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ पिक्चर, देयर माइट बी टेबल, देयर माइट बी चेयर, देयर माइट बी मार्कर, चौक, डस्टर. मतलब ये आपको सिर्फ लिखना है, और नहीं तो हाथ उठाकर बोलना है कि क्या आपको दिखाई दिया. दैट ऑल्सो इज फाइन. ठीक है. सो आई थिंक एक सिंपल सा पिक्चर आएगा, जो आपको दिखाई देगा, आपको वो लिखना है. ठीक है. इज दैट फाइन विथ ऑल ऑफ यू? कैन आई एक्सपेक्ट यू टू अनम्यूट एंड Yes, sir. Yes sir, yes sir. okay. So and only challenge will be we will play it in a real game, because trust and transparency we all expect from our students. So वो सिर्फ 10 सेकेंड के लिए रहेगा स्क्रीन पे, आपको वही देख के लिखना है. So we will not go for any kind of a snapshot, screenshot sort of a thing. वो हम नहीं करेंगे, जैसे कि हम स्टूडेंट्स को रिमाइंड करते हैं. एंड वी विल जस्ट प्ले इट इन रियल टाइम, तभी मजा आएगा. आई होप अरुण कुमार सर फाइन, डॉक्टर रतीश कुमार सर, प्रोफेसर विनोद कुमार सर, ऑल फाइन. ठीक है, सही है. रेडी सर? Yes, sir. Okay. So I think I will request Bhavna ma'am also to confirm if she is ready. Yes sir. अच्छा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो पिक्चर देखने के बाद, नॉट द फर्स्ट वन, पहले स्क्रीन पे एक पिक्चर आएगा वेयर यू विल सी अ मैन होल्डिंग अ फुटबॉल, वो वाला नहीं, वो एक ट्रेलर है, उसको मत लिखिए, वो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेट मी एक्सप्लेन दैट, एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू विल सी द नेक्स्ट वन. सो भावना मैम एक बार कंफर्म कीजिए. आई थिंक
You are seeing on screen a picture, na? I can see a picture, sir. Man holding football. हाँ हाँ, ये वाला नहीं है. दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. ये मत देखिए. ये जस्ट एन एग्जाम्पल. शायद इस स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पीपल आर रनिंग, सो एंड देन समबडी इज होल्डिंग अ फुटबॉल. तो ऐसा, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखना है 10 सेकंड के लिए. आई होप यू कैन अनम्यूट एंड कंफर्म. आर यू रेडी? Okay, sir. Okay, fine. So I think for everybody, kindly your time starts now. The question is, अच्छा, please mute yourself, all of you. Thank you. Do you see what I see? मतलब we are having around 30 participants. So एक ही चीज सबको दिखाएंगे हम. But is that कि everybody is saying the same thing or you are saying something different? That is what we want to find out. आपको लिखना है चैट बॉक्स में आपको क्या दिखाई देता है इन द पिक्चर. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओनली फॉर 10 seconds in real time. I'll count the time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gone. Quickly write in the chat box आपको क्या दिखाई दिया. जो आपको दिखाई दिया please write it or raise your hands. That will also be fine. अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं so please raise your hands. That will be appreciated. बोले सर. एक एक करके please wait. Let me first see. चैट बॉक्स में जो डालना चाहते हैं प्लीज डाल दीजिए. उसके बाद काइंडली raise your hands also. How many of us saw whatever things? We will try and figure it out. Let me check the chat box. सबसे पहले आंसर किसने दिया है देखते हैं. जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ सर. हाँ हाँ, कमिंग सर. विकास सर एक सेकंड जस्ट प्लीज रुक जाइए. आई विल जस्ट कम टू यू. लेट मी चेक. I think yes. The first answer is it? Yes, I think is it बॉल वाला स्लाइड नहीं उसके बाद से. I think yes. Here we go with प्रोफेसर विद्यार्थी विकास. यस सर बोलिए अनम्यूट करके. आपने क्या देखा? जी सर, इसमें घोड़े दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रहे हैं, एक लड़की दिखाई दे रही है. वंडरफुल. और ये प्लांट दिखाई दे रहा है. अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आप रहिए प्लीज. आप सुनिए दूसरे लोग क्या आंसर दे रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट आंसर. प्रोफेसर पासवान आपने क्या देखा? प्रोफेसर अवेंद्र पासवान सर. जी मैंने तो गर्ल देखा सर और बस डाल दिया. अच्छा अच्छा, आपको कुछ अलग और कुछ दिखाई दिया? योर फ्रेंड वाज सेइंग प्रोफेसर विद्यार्थी. आज मेरी एनिवर्सरी है तो आज वो दिख रही है ज्यादा. अच्छा, आज सिर्फ गाड़ी दिखेगा. दैट्स वेरी गुड. ओके, मे बी अ लेडी एंड दैट टू योर बेटर हाफ. ठीक है. ओके. यस प्रोफेसर अमृता मैम. यस प्लीज अनम्यूट एंड टेल अस आपने क्या लिखा है. घोड़े दिखे सर, बर्ड्स दिखी, ब्यूटीफुल गर्ल फेस और आसमान दिखा जो मैं लिख नहीं पाई हूँ. अच्छा अच्छा, बढ़िया है. वंडरफुल. ओके. आई थिंक प्रोफेसर सुनील कुमार सर बोलिए प्लीज. ए ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखी सर. अच्छा, वही सिर्फ दिखाई दिया आपको लाइक अर्जुना की तरह और कुछ नहीं दिखा? अच्छा अच्छा, ओके फाइन. ठीक है, रहिए प्लीज. बट यू आर हियरिंग ना आपका दोस्त क्या सब बोल रहे थे, what all they observed, so we will watch that also. Okay, Dr. Madhuwala ma'am, yes, what did you see ma'am? हाँ सर, वो हॉर्स दिखे, बर्ड्स दिखे, ऑब्वियसली अमृता मैम की तरह स्काई दिखा बट उसको लिख नहीं पाई. और एक मुझे, मैं गर्ल कहूँ या ब्यूटीफुल लेडी, खूबसूरत जो बहुत सुंदर से मेकअप लगाई हुई है वो दिखी. Wonderful, wonderful. Thank you. Professor Krishnan, what did you see ma'am? Sir, a beautiful girl. I saw the slide and I entered. I should have taken some more time. Acha, ma'am, in the first instant, आपने you saw a beautiful girl. Okay. Professor Jay Prakash sir, yes, thank you, ma'am. Professor Jay Prakash sir, आपने क्या देखा? सर उसमें लड़की के चित्र बने हुए थे और जो बाल थे वो घोड़े के थे और बर्ड्स थे फ्लाइंग करते. Wonderful, wonderful, very good. I think everybody is playing well. देखिए, irrespective of our discipline, कौन सा विभाग से हम बिलोंग करते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में है, वो सब मैटर नहीं करता. बट वी ऑल आर प्लेइंग ग्रेट. आई थिंक यस. प्रोफेसर कुंदन सर बोलिए प्लीज. सर धुंध में पहले तो लड़की दिखी, धुंध छटा तो घोड़े और चिड़िया उड़ती दिख गई. Wonderful. I think very rightly. Sir has also seen a beautiful lady and maybe horses and birds also. Yes, भावना मैम बोलिए प्लीज. आपने क्या देखा?
सर फर्स्टली सर मुझे एक सुंदर लड़की दिखी एंड सर देन 2 horses at the side and then few birds flying at the top and I think so that nose was also a bird. Okay, wonderful. Okay, very good. I think Professor Ansari sir, आपने क्या देखा? सर वो हॉर्स है, गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है और बर्ड्स हैं और Okay. स्काई का सीन। थैंक यू सर। Very good, very good. I think Professor Arun Kumar sir has also noticed. Yes sir, Arun Kumar sir, बोलिए please. हाँ तो मुझे तो एक गर्ल्स लगे और दोनों शायद 2 घोड़े थे, कुछ बर्ड्स है, लगा कि जैसे कि कुछ सोचने की शक्ति इतनी स्वतंत्र होनी चाहिए, उड़ने की Okay. क्षमता जैसे होनी चाहिए सर। Very good. I think wonderful. Professor Uday Kumar sir, thank you sir. Professor Uday Kumar sir ने कुछ देखा है? Yes, I think Professor Uday Kumar sir has written about horse. Sir ने देखा है शायद. Yes sir, बोलिए. क्या दिखाई दिया आपको? जी सर, घोड़ा और लड़की। अच्छा, दोनों ही दिखाई दिया। और कुछ दिखाई दिया उन दोनों को छोड़ के? जी और उतना जल्दी तो सर नहीं देख अच्छा पाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, गुड। आई थिंक रहिए सर, हम दोबारा दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। प्रोफेसर पांडे, यस प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे सर, आपने कुछ दिखा? जी सर, वो लड़की थी और उसके ऊपर घोड़े का बाल दिखाई दिया। ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। आई थिंक प्रोफेसर मंडल, पुलकित कुमार मंडल सर, आप प्रोफेसर प्रभाकर इज आल्सो देयर। बोलिए सर, प्रोफेसर मंडल, क्या दिखाई दिया आपको? जी मुझे तो केवल बॉल दिखी सर। अच्छा, वो वाला नहीं, उसके बाद वाला जो स्लाइड था आपको नहीं दिखाई दिया उसमें? वो नहीं, वो वाला बॉल वाला तो ट्रेलर था, उसके बाद जो आया था वो स्लाइड आप मिस कर गए। ठीक है, हम दोबारा दिखाएंगे हर किसी को। अच्छा, वी सी द पिक्चर वंस अगेन, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी सी द पिक्चर, आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली 10 सेकेंड के लिए रहेगा, सो पे अटेंशन एंड डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। सिर्फ देखिए, कुछ मत लिखिएगा। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर दैट। पहले आप देखिए एंड आई थिंक वी कैन रिक्वेस्ट प्रोफेसर Priti Kumari ma'am to confirm अगर she is able to see that slide once again. आप देखिए मैम and kindly confirm कीजिए please. Here comes a slide for all of you. Priti ma'am, आप देख पा रही है? Yes sir, yes sir. Not this one but this one. Your time starts now. I think 10 सेकेंड के लिए रहेगा सिर्फ. So the question is, do you see what I see? So this is a question to the entire audience and here comes your picture once again. Watch carefully for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gone. Don't write anything. Please wait for my question. Don't write anything. Please, कुछ मत लिखिए. My question is following up. Wait, please. Now you answer. सिर्फ नंबर दीजिएगा। 1, 2, 3, 4 लिखना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखना है। Check the chat box and please give your answer. All of you give your answer in the chat box. How many birds are there? मेरा question यही है. Please put your answer in the chat box. आप अपना आंसर chat box में सिर्फ नंबर लिख दीजिए। 1, 2, 3. The fastest answer is coming from, I think, let me check who is giving the fastest answer this time. Okay, Professor Vikas once again. Sir, Professor Vikas, how many, sir, you have given? कितने? Professor? Three birds. Okay, very good. And next one, I think we have Professor Avendra Paswan. How many, sir? Professor Paswan, 3? Three words, sir. Okay, very good. Kundan Lal sir ji, कितने? 3 दिखे सर। हाँ, 3 or more. सर डीपली देखा तो सर 3 ही नजर आया और अच्छा ठीक है, थैंक यू। प्रोफेसर अमृता पी मैम इज सेइंग गेसिंग। ओके ठीक है, फिर भी आंसर क्या है मैम? 5. वंडरफुल, गुड। डॉक्टर सुमन कुमार सर, व्हाट इज द आंसर? डॉक्टर सुमन कुमार? 3 सर, 3. Okay, Dr. Suman Kumar is saying 3. Okay. Acha, I think Bhavna ma'am has given probably 7. Okay. Ashok Kumar sir, how many? Professor Ashok Kumar? सर वो 3 देखे, 3 देखे, 2 okay. हॉर्स देखे, एक लड़की देखा। नहीं, बर्ड्स कितने देखे? जी सर, बर्ड्स कितने थे? क्वेश्चन वाज कितने बर्ड्स? 3 थे सर।
Okay, very good, sir. Thank you. Professor Krishnan, what is your answer? 3. Professor Krishnan. Professor Mandal, पुलकित कुमार मंडल सर, आपका क्या आंसर है? 4. ये 2 घोड़े देखे, एक हाँ, लड़की। नहीं, बर्ड्स कितने थे? बर्ड्स कितने थे? बर्ड्स तो 3 थे। अच्छा, ठीक है, सो वही पूछा गया था। ठीक है, आपका आंसर वी गॉट इट। प्रोफेसर, Sorry, sir. Mine is three birds were there. अच्छा, ठीक है। एंड check the chat box. I hope are you surprised, ma'am? Question was, do you see what I see? मतलब एक पिक्चर हर किसी ने देखा, बट द आंसर्स आर नॉट द सेम। कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 7 एंड मेनी मोर। ओके, सो आई थिंक प्रोफेसर मिथिलेश पासवान सर, कितने सर पक्षी दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया सर। 3. Okay, very good. Thank you, sir. Professor Arun Kumar sir, how many? सर 4 मुझे नजर आए। 4 नजर आए, ठीक है। Okay, Professor Ansari sir, how many? सर 5 सर 5। 5, अच्छा, ठीक है। Professor Vikash Kumar has given 7. Dr. Amit Kumar has given 7. Okay, and I think Vidatri Vikas has given 6. Okay, Ratish sir, आपका कुछ कितना दिखाई दिया आपको? I kept looking at that beautiful lady only. I did not see anything else. Okay, sir was observing the beautiful face. Wonderful, sir. आपके लिए और एक बार हम दिखाएंगे। Now question is, आपको दोबारा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा एंड आपको सिर्फ ये करना है, जस्ट लुक फॉर एग्जांपल। अगर प्लीज हैंग ऑन, थैंक यू। अगर आपने अभी आंसर दिया है 3 एंड बाद में अगर दोबारा देखने के बाद आपको लगता है कि 5, सो राइट 3-5। आई होप यू आर गेटिंग इट ना। मतलब पहले आपको लगा था कि 3 है, अभी दोबारा देखने से आपको लगता है 5। किसी ने अगर दिया है मे बी 6, लाइक विदात्री विकास सर, एंड देन यू थिंक नो, दोबारा देखने से भी आपको लगता है 6 ही है, सो यू राइट 6-6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब माय क्वेश्चन इज, आप अपना आंसर बदलना चाहते हैं कि वही रहना चाहते हैं? ठीक है, सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो माय क्वेश्चन विल बी, डू यू वांट टू चेंज योर आंसर? तो अगर आपको लगता है कि नो, फाइन, आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर वंस अगेन, अभी मत लिखिए, आप देखिए दोबारा, एंड आई होप वी आर पेइंग इट ऑन रियल टाइम। सो आई रिक्वेस्ट रतीश सर, आप देखिए, आपके लिए आई एम पुटिंग द पिक्चर वंस अगेन एंड वॉच फॉर 10 seconds. माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? ठीक है, सो हियर कम्स द पिक्चर। सर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Okay, so here comes the slide. I think yes, we are having it for you. 10 seconds के लिए. Question is, do you see what I see? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 second gone. Another 5 second grace. 11, 12, 13, 14, 15. So let's wait for me to put the message in the chat box. एक बार रुक जाइए प्लीज। सो जिसको आंसर चेंज करना है, आप लिखिए यस एंड गिव द नंबर। अगर आपको चेंज करने के बाद लिखना है 3 से लेके 5, गिव 3 हाइफन। प्लीज राइट बोथ द नंबर्स। पहले आप कितने दिए थे, बाद में क्या दे रहे हैं, दोनों लिखिए प्लीज। हाँ, जैसे कि भावना मैम इज राइटिंग 7, अभी बदल के हो गया 8। अमृता मैम इज राइटिंग 5, वेरी गुड, ऐसा ही लिखना है। अरुण सर इज राइटिंग यस, पहले उन्होंने 4 देखे थे, अभी 3, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। आई थिंक विकास कुमार इज राइटिंग 3 से 8। प्रोफेसर पासवान इज राइटिंग 3 से लेके 5। प्रोफेसर कृष्णन इज राइटिंग 3 से लेके 3 है, ओके। जयप्रकाश सर इज राइटिंग 4, मतलब पहले भी 4 देखे थे, अभी भी 4 देख रहे थे, ओके। एंड प्रोफेसर डॉक्टर सुमन कुमार हैज रिटन 3 से लेके 6, मतलब डबल हो गया, वंडरफुल, ओके। प्रोफेसर अंसारी सर, पहले कितने थे? 3, अब 8 हो गए सर। ओके, वंडरफुल, वेरी गुड, अच्छा, अब 8 हो गए। Still, I think there are differences in our answers. Wonderful. Professor Pandey has given 3, पहले भी था, अभी भी 3 है, ओके। नंबर सिर्फ लिखना है। कुंदन सर कितने होंगे अभी?
How many birds? सर और 300 total? आकाश पे थे, एक नाक पे लगा, एक होठ पे लगा, 5 हो गए सर। अच्छा ठीक है, तो पहले 3 था, अभी 5 हो गया। ओके गुड। अच्छा रचित कुमार सर, सॉरी रतीश कुमार सर बोलिए, हाउ मेनी यू सॉ बर्ड्स? अभी भी क्या सिर्फ फेस दिखाई दिया कि कुछ बर्ड्स वगैरह दिखाई दिया? नहीं, मुझे 5 दिखाई दिए। ओह वंडरफुल, पहले इंस्टेंस में 5, ठीक है। सो आई थिंक वी आर गेटिंग लॉट ऑफ आंसर्स एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार अगर आप प्लीज चैट बॉक्स देखेंगे नाउ, व्हाट इज दिस? मतलब you see, if your answer is correct Amrita ma'am, then maybe a lot of people are getting it wrong. सही है ना मैम? अगर 5 है तो मतलब you are surprised ना? Some are saying 7, some are saying maybe 3, 4. Yes sir, but we'll have to see the picture again. Okay, I think yes, that's the best part of it. I'll get Dr. Madhuwala ma'am into the discussion. Ma'am आप आइए please. Your answer remains the same from the very beginning. What is that answer? आप बोलिए हर किसी को. 8. You are confident? Yes sir, I'm 100%. अच्छा, I think how many of you are surprised? ये मैम को 8 दिखाई दिया, हमें तो नहीं दिखाई दिया. She gave the answer in the first place. आपको लगता है yes, a lot of people are surprised. Okay, ठीक है. Yes. And I think how many birds are there actually? I think let it be a little bit of a suspense for the time being, and we move on, and we'll come back to that little later on. But I think we need to appreciate Dr. Madhuwala ma'am for getting the answer in the first place. Actually, there are 8 birds hidden. So we can raise our hands. हम अपना हाथ थोड़ा ऊपर करके उनको appreciate कर सकते हैं. Please appreciate ma'am. And I can clap for ma'am. Wonderful ma'am. Thank you sir. Thank you. Wonderful. So please show your appreciation मैंने भी आप बोला है सर। by raising your hands. And after maybe seeing it for the second time, I think some of us also got it right. So I want to appreciate them also. I think a lot of people like Professor Anand got it right, and I think Professor Pulkit Kumar Mandal sir also got it right in the second case. I think anybody else, if you got it right? Yes, Professor Vidyarthi Vikas sir. कैसे? हाँ. Yes, Professor Vikas got it right. 8, I think wonderful. And Professor Vikash Kumar also got it earlier. 3 से लेके 8. Professor Ansari, thank you sir, Professor Ansari for showing the right answer. Professor Dr. Amit Kumar got it right. पहले 7 थे, अभी 8 हो गया. So I think wonderful. Professor Bhavna ma'am also got it ना. पहले 7 थे and now it's 8. Bhavna ma'am, I think wonderful. So you got it right. Professor Mukesh Kumar, Professor Pulkit Kumar Mandal, they all got it 8. Actually, there are 8 birds hidden inside it. And I think when we look at the next slide, I think what is the takeaway? So that is, I think I'll request Professor Ansari to confirm if the next slide is visible to you. Kindly just check and confirm, sir, please. I'll present the next slide to you. So what is the takeaway? Sir, is it visible to you? Professor Ansari? Yes, sir. Yes, sir. दिखाई दे रहा है आपको slide? Yes. हाँ, slide दिख रहा है सर. हाँ. So what is the takeaway? मतलब इससे हमको क्या मिलता है? What is the ultimate conclusion? You see, the conclusion is we all are in the academic domain. हम higher education system में belong करते हैं. So हमारा एक role होता है. And I think the role of academician, if we see, are broadly, there are many. I think अगर आप देखेंगे बहुत सारे role हमको निभाना पड़ता है. But I think please remember there are 3 important roles which we have to play in 21st century. सबसे पहले जो होता है interpersonal role. I think that is what is the first one. And for the last almost 2 hours, I think 2.5 hours, we are actually spending time together. हम एक दूसरे से साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है, अपना तजुर्बा आप शेयर कर रहे हैं, अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस है, भावना है, यू आर शेयरिंग. So that is what I think every day we have to do. So that is called interpersonal role. And parashparik जो भूमिका होता है, so that is there. Second one, I think you will agree that we are dealing with lots of information. So I think whether we talk about day to day, our subject wise syllabus लेके deal करता है, maybe if you are into a little bit of setting of question papers before the exam, evaluation करना पड़ता है, you are doing some kind of a project guidance, you are doing some kind of a research work. हर जगह इंफॉर्मेशन को लेके हमको काम करना पड़ता है. सो दैट इज द सेकंड वन. यू कैन सी इंफॉर्मेशनल रोल. एंड द सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यू सी वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द लास्ट 5-10 मिनट्स. 10 मिनट पहले
I think when we came from the break, we just played a role, and उस role playing के अंदर से क्या किया हमने information को process किया. Somebody said there are three things. One, the face of the lady. Then we have horses. हमने birds दिखाई दिया, and then we process the information further. When I asked कितने पक्षी दिखाई दिए आपको, so I think we got different answers. मतलब we all actually processed information. I request somebody, probably you have unmuted. Kindly please mute yourself. Thank you. I think noise is coming. Please अपना audio mute कर लीजिए please. Thank you. Thank you so much. And the second one, as I was saying, every day as academician, we have to deal with lots of information. And I think when we look at academic and academic administration as maybe the professor in charge, or as the head of the department, or maybe as a dean, or in whatever capacity, हम सभी को information लेके काम करना पड़ता है. So that we experienced in the form of role playing for last 10 minutes. हमने भी information process किया, and then we took a decision. When I said how many birds were there, you gave me a decision. आप सभी ने अपना decision दिया है, and I think Dr. Madhubala ma'am gave the decision in the first place, and she maybe said that is her final and last decision, which was 8 birds उन्होंने देखे थे. And then we had different professors giving decisions the second time also. मतलब निर्णय लेने की भूमिका. So that is also very important for every academician. So I will request you once again in the chat box. Kindly just check it. I hope you will write yes or no in the chat box. Matlab, from this little bit of role playing exercise, I am requesting you, roles of academician, is it clear for all of you in 21st century? Just write yes or no, because I think every day we have to deal with people. Interpersonal मतलब एक दूसरे से साथ हम कैसे जुड़ते हैं, whether it's our colleagues, whether it's maybe the students, whether we talk about the guardian, the parents जिसको हम meet करते पढ़ते हैं, or we talk about maybe lot of other जो people है around us जिसके साथ हमको संबंध रखना पड़ता है. The second one, information, as we have already understood, I think when we are doing research and all, उसमें भी बहुत सारे informations लेके हमको काम करना पड़ता है according to our domain, जो भी है, whether it's a history, whether it's some other branches of science, social science, or maybe commerce, management, जो भी है. So I think these are positive responses which we are getting, and I think we have taken a decision. And nice to see, yes, everybody, those who are right now in the session, whether it's I think when we talk about Professor Ansari, Professor Krishnan, Professor Paswan, I think Dr. Suman Kumar, thank you, Professor Pandey, Professor Amarendra Anand, Dr. Preeti Kumari ma'am, Dr. Amit Kumar sir, everybody, I hope we are moving forward. Now on this, I think since we are now experienced, हमने एक role playing कर चुके, so we will have another one. I hope you will not feel bored ना. If we have a small role playing exercise, so we can move ahead with that now, and then there will be a very few more. very interesting, sir. Okay, Very interesting. thank you. As we move forward, I think we will try and have another role playing exercise. So let's try and request Professor I think Ansari, एक बार sir confirm कर दीजिए whether the slide is visible to you or not about this roles of academician, जो एक academicians को perform करना पड़ता है. वो slide visible है आपको sir? 3 जो roles. Yes, sir. Interpersonal. Thank you so much, sir. Rahiye, please. So interpersonal role, we are talking about informational and decision-making role. So you see, life is a journey. And as I said that somebody like to travel, somebody like to do social work. मतलब we will talk about somebody's journey also in life. So आपको थोड़ा ये देखना है. And I hope some of you hopefully know the person. आपको identify करना है. ये किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी. So the rule of the game is I'll tell you about somebody's life. आपको जो करना है, I'll show you some clues. Let me explain the rule of the game. Ashok Kumar sir, I hope we are connecting with you. Next slide में आपको दिखाई देगा एक clue दिखाई देगा, ठीक है? And I think if you get the answer, आप guess करते रहिए, ठीक है? There are multiple time आप बदल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है? जो पहले क्लू में आप लिखना चाहेंगे, so write 1 and give a hyphen और नाम लिखना है, ठीक है?
सो अगर आपको लगता है कि पहले क्लू में आपको किसी के बारे में लगता है कि ये शायद ये व्यक्तित्व होगा, सो उनके बारे में आपको सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। सो Yes, sir. अगर आपको लगता है कि पहले क्लू में आपको पता नहीं चल रहा है, सो आप राइट 1-no, मतलब मैं दूसरा क्लू सभी को दूंगा। इज इट क्लियर? आई थिंक प्रोफेसर मंडल, Yes, sir. the way we are going to go about it, and I think it is a very famous personality, a sports person, जिसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे उनका लाइफ के बारे में। I hope Professor Kundan Lal sir, is it fine? Professor Bhavna ma'am, okay. So I will expect all of you to write one, then hyphen the name. If you get it on the first clue, अगर आपको लगता है कि first clue में मुझे पता नहीं चल रहा है, please write 1-no. Then I'll show you the next clue. Then it will be 2- there also, if you don't get the name, then also you write do-no. Matlab you are unable to answer on the second clue. Is that clear? I think Professor Ashok Kumar sir. Sir. Okay, thank you, thank you. So इस हिसाब से हम move करेंगे आगे. I think Professor Pravakar, is it clear? Is it clear? So the question is, Yes, sir. you Question can is change clear, your sir. answer. हाँ बोलिए, अगर कुछ पूछना है। Question is clear, sir. हाँ ठीक है। So आप सिर्फ लिखते जाइएगा and you can change your answer. Professor Ansari, is it clear? अगेन सर अगेन। हाँ हाँ, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ था, मैं एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में क्लू देते रहूंगा, ठीक है। अगर आपको पहले क्लू में ही पता चल रहा है कौन है, सो आप राइट 1-name ऑफ द पर्सन। यस ठीक सर। है, अगर आपको पहले क्लू में ठीक से पता नहीं चल रहा है, सो राइट 1-no, ठीक है। यस सर। सो आई विल शो यू द सेकंड क्लू। इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अगर दूसरा क्लू में भी आपको नहीं पता चल रहा है, देन ऑल्सो यू राइट 2-no। यस सर। ठीक है, अगर पता चल रहा है, एंड यू कैन चेंज। जैसे कि पहले क्लू में अगर आपको लगता है कि ये मिस्टर अमिताभ बच्चन के बारे में है, और दूसरा क्लू में लाके लगता है कि नहीं भाई ये आमिर खान के बारे में, यू कैन डू दैट। मतलब पहले वन यू कैन राइट अमिताभ बच्चन, दूसरे में आप लिख सकते हैं आमिर खान, फॉर एन एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग इट? आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आर वी रेडी? सो आई एम आस्किंग इट वंस अगेन, आर वी रेडी? जस्ट राइट yes or no in the chat box. बहुत वार्म अप हो गया। I hope we are ready. So kindly just write yes or no, then we will move ahead. चैट बॉक्स में सिर्फ yes or no लिख दीजिए प्लीज, और इफ यू वांट यू कैन राइट y और n, वो भी चलेगा। सो वट एवर वे। प्रोफेसर आनंद, आप सुन पाए व्हाट आई वाज शेयरिंग सर, और मिस कर गए? यस सर, सुन लिया सर। अच्छा अच्छा। सो एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे, एंड देन वी हैव टू गेस ये कौन है, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ अनम्यूट करके आंसर मत दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, जो भी आपको लगता है नाम, सो वी कैन डू दैट इन द चैट बॉक्स। आई थिंक यस, लॉट ऑफ आवर एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग यस, वी ऑल आर रेडी फॉर दिस सिंपल रोल प्लेइंग एक्सरसाइज। ठीक है, हम प्रोफेसर उदय कुमार जी सर से पूछते हैं। सर, आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है? जी सर। अच्छा सर, आप थोड़ा देख के बोलिए। आई विल प्रेजेंट द स्क्रीन वंस अगेन, वेदर इट इज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक मिनट सर, प्लीज होल्ड कीजिए। सर दिखाई दे रहा है अबाउट लाइफ जर्नी? जी जी। हाँ हाँ ठीक है। सो लाइफ इज अ जर्नी, सो हम किसी के लाइफ के जर्नी के बारे में अभी देखेंगे बेस्ड ऑन सम क्लू। थैंक यू सर, म्यूट कीजिए। एंड आफ्टर द फर्स्ट क्लू आपको मिल जाता है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो 1- दे के, हाइफन दे के, कोई भी नाम याद आता है तो लिखिए, नहीं तो सिर्फ लिखिए नो, वो चलेगा, ठीक है। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्लू। द फर्स्ट क्लू इज शी वाज बोर्न इन 1988। मतलब अगर आप देख लेते हैं, सो इट्स अराउंड almost 32 years back, and she was a national level volleyball player. So don't give me the answer by unmuting, आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको पता है किसके बारे में बातचीत होने वाला है, सो यू राइट, और एल्स यू कैन राइट 1 देके आप लिखिए नो, मुझे पता नहीं। डोंट गिव मी द आंसर, बट आप अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। सही गलत बाद में देखा जाएगा, बट एनीबडी गिवन द आंसर ऑन द फर्स्ट क्लू, और दूसरा क्लू देखना पसंद करेंगे आप? बोलिए, दूसरा क्लू चाहिए? टेल मी यस और नो। शुड आई गिव यू द सेकंड क्लू? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स इंटरेस्टेड फॉर द सेकंड क्लू? किसी और को चाहिए देखना? प्लीज हैव अ लुक। यस सर। Okay, fine. So we move on to the second clue. On 11th of April 2011, मतलब आज से अराउंड
11 years back, she was traveling from Lucknow to Delhi. So that is also very normal. अगर इस clue में आपको guess हो रहा है कि this is all about guess walk, so don't feel bad. जे I'll hold on to my answer, ऐसा नहीं है. आप दीजिए, you can change your answer multiple times, no problem. So on 11th of April, she was traveling from Lucknow to Delhi. दूसरा क्लू में किसी ने आंसर दिया है? सिर्फ वो बोलिए कि हाँ मैंने डाला है कि नहीं डाला है. सर डाला है. वेरी गुड. नाम बोलिए, नाम बोलिए जो डाला है प्लीज. अरुणिमा सिन्हा. अच्छा, डोंट गिव नाम, मतलब आपका नाम बोलिए प्लीज. अमृता. अच्छा, ठीक है, डोंट गिव द आंसर. ओके. Now see, this incident happened. This famous sports personality thrown out of train by robbers when she resisted them. So उन्होंने जब रेजिस्ट करने का कोशिश किया, शी वाज एक्चुअली बाहर फेंका गया था उनको, which is a real tragedy by robbers when she resisted them. So this is a major kind of I think tragedy जो stuck in the life of that sports person. इसके बाद क्या हुआ, I think बहुत ही a sad kind of a incident that उनका leg was amputated below the knee. And दूसरे पैर पे there were 2 rods also in the other leg. So I think this is just about a life's journey, but this sports person was determined to achieve something in life. I think we have heard little bit from everybody. आपसे थोड़ा बातचीत करते हुए, थोड़ा जान पहचान होते हुए, we have heard little bit about your lives stories and maybe a little bit of your memorable moments and all. But this young lady, the sports person, was determined to achieve something in life. Now, what is that she was determined to achieve? I think here comes the thing which is called the Vyaktitva, or the personality of the person. I think when we talk about life skills and balancing work life for academician and mentoring, ये सब जो होता है, so I think she decided to climb Mount Everest. Now सोचिए कि what kind of a determination, what kind of a personality and attitude she was is having. And I think hopefully I think you all have figured it out by now. On May 21st 2013, she became the first female amputee to climb Mount Everest. And on this part, I think we have seen so many clues. If you have got the name, please put it in the chat box. अगर आपको लगता है कि आपने आइडेंटिफाई कर चुके कि ये किसके बारे में अभी तक बातचीत हो रहा था, I think you can kindly put it in the chat box, and I think then we will try and check who is giving what answer in the chat box. Let me check. When we talk about who are we referring to? I think first clue pe Mukesh sir tried. Thank you. Dr. Preeti Kumari ma'am tried. I think Professor Pravakar also honest. Thank you. Professor Anand has said no. Professor Pulkit Kumar, Professor Vikas Kumar sir, Professor Arun Kumar sir had said no. Professor Dr. Shuman Kumar said no. Dr. Sunita Kumari said no. Professor Pulkit Kumar Mandal got it in the first clue, I believe. Yes. Professor Paswan has said yes. Thank you. Professor Amrita ma'am on the first clue said no. Professor Ashok Kumar, Professor Vinod Kumar Pandey, I think Professor Sunil Kumar said no on the first clue. Second clue pe Arunima, I think Sinha's name came from Professor Amrita ma'am. And then anybody in the second clue? No. A lot of responses are on the no side. Yes, I think Kundan Lal sir has given it on the fifth clue. Third clue maybe he tried. Thank you very much. And I think Dr. Madhuwala, which clue ma'am you have given? Dr. Madhuwala ma'am. Last clue, sir. Last clue. Last clue में. Okay, Professor. Thank you. Bhavna Singh ma'am had also given. Ma'am, कौन सा clue में आपने डाला है? Sir, last clue. Last clue में, ठीक है. I think there are many of us. I think Professor Pandey had also got it. Thank you. Professor Pandey, कौन सा clue में डाला है आपने? Professor Vinod Kumar Pandey sir. The last वाले में डाला था. Last. अच्छा, बहुत बढ़िया. I think yes. But we had somebody apart from Amrita ma'am. In the first clue, I think they have said yes. Hopefully, I think let's appreciate Professor Jai Prakash. No, it's not Professor Jai Prakash. Anybody given yes on the first clue? Yes, Professor Paswan.
काइंडली अनम्यूट एंड बोलिए सर, आपको पता था पहले क्लू पे द आंसर? नहीं सर, मैंने फर्स्ट क्लू पे बोला था कि नहीं। अच्छा, नहीं मतलब आपको क्लियर आइडिया नहीं था। अच्छा, ओके, ठीक है। बट अभी पता चल गया कि कौन किसके बारे में बात हो रहा था? नहीं सर, अभी भी अच्छा, मुझे ठीक है। मेरे पास अच्छा, इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे अच्छा, ठीक है। सो हम देखते रहिए, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लू we'll get to hear, and then we'll invite Amrita ma'am to share that point. So we are just taking it forward, and I will request Bhavna ma'am kindly confirm if the slide is still visible to you, ma'am. आपको दिखाई दे रहा था? Yes, sir. Okay, so these were the clues, I think, one by one. With so, the fourth clue was her leg got amputated below the knee, and there were two rods in the other leg. दूसरे पैर पे भी I think there were two rods. This is the point जो हम actually I am trying to share before everybody. In spite of this tragedy, I think she was determined to achieve something in life. And I think when we stand before our students, as she had been a source of inspiration for many of us, so she decided to climb Mount Everest. Was that very easy? आज सुबह हमने जब बातचीत शुरू किया था, we said how do we define success, and is there any shortcut to success? The answer is no. It took her 52 days of tough climbing. 52 दिन लग गया उनको to try and actually do the summit of Mount Everest, and she was awarded Padma Shri in 2015. I think we need to put our hands together in the form of raising of hands and show our respect and appreciation for none other than Arunima Sinha, the first female amputee to conquer Mount Everest. And here comes, I think, Arunima Sinha, who is a real inspiration for many of us and maybe for people around and in the outside world. So I will expect all of us to appreciate Arunima Sinha for this wonderful achievement, and in spite of I think what she went through, जो लाइफ के साथ उनको गुजरना पड़ा, उससे I think what is the lesson that we are taking away today from this particular journey of life, and I think we will honestly appreciate that. And this is a picture where I think she was awarded Padma Shri in 2015 by the then Honorable President, late Shri Pranab Mukherjee, so who is handing over the Padma Shri award to Arunima Sinha ji. I will request Amrita ma'am to kindly come forward and unmute and tell us, ma'am, you had heard about this life's journey, na? About Arunima Sinha. So Yes, you sir. figured it out? हाँ, so you figured it out, na? तो so I think yes, बोलिए थोड़ा आपको. सर इनके बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत इंस्पायरिंग है। पहला तो जब इनको ट्रेन से फेंका गया और वो सारी रात जो पड़ी रही, इनके पैर को चूहे काटते रहे, चींटे लगते रहे, एंड शी वाज कंप्लीटली इन पेन एंड देयर वाज नो हेल्प। देन शी वाज सेंट टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां उनका इलाज नहीं हो पाया। ये सारा स्ट्रगल तो उन्होंने जो देखा सो देखा। व्हेन शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग, ये सारा उनका इंटरव्यू है, वीडियो है, आप लोग सब जरूर देखिएगा। और वहां पे जो शेरपा हु वाज हेल्पिंग हर टू क्लाइंब, उसने भी हिम्मत हार दी। उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। जो कहते हैं ना, जब आप कुछ ठान लो तो सारी कायनात मिलके उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो शेरपा स्टार्टेड सेइंग कि अब तो तुम मर जाओगी, यहाँ कुछ नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गया था उनका सिलेंडर। एंड देन अ ग्रुप वाज कमिंग, जिसमें से कुछ लोग हताश हो गए थे। दे थ्रू द ऑक्सीजन सिलेंडर एंड दे वेंट अवे। और वो हिमालय पे उनको वो ऑक्सीजन मिला, एंड शी देन सक्सीडेड। सो दिस इज really Wonderful. very inspiring. Absolutely very inspiring, true. And I think we once again appreciate by raising our hands to Arunima Sinha, and maybe also for Amrita ma'am for getting it right and sharing that little bit of inspirational story or maybe real life incident. This is about life's journey. आज का session जो है, it's on life skills and having a little bit of a balance in our work life. And also I think yes, thanks all of you for raising your hand and showing our appreciation. As we move forward, ma'am, Amrita, kindly just कनेक्ट दिखा रहा है सर का। सर लेफ्ट हो गया है। लेफ्ट हो गया। लेफ्ट नहीं, नेटवर्क इशू से डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। Yeah, sorry, I just temporarily experienced a little bit of connectivity issues. So we were talking about Arunima Sinha, and I think I'll share it. Just give me a second, please. I'll just shift over to a hotspot and I'll just connect. Just give me a second, please.
Yes, I hope I'm audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Sorry for the inconvenience. Actually, there is a little bit of power interruption in my place, so I had to shift over from Wi-Fi to hotspot. So sorry for that, but we move on. Anyway, I was requesting ma'am to kindly confirm whether the slide is visible to her, ma'am. Bhavna ma'am, एक बार देख लीजिए. And we were talking about Arunima Sinha ji and how she is a real inspiration. So. I hope the slide is visible to you. Yes, sir. It's visible. Okay, fine. Yeah, thank you. So we were talking about this inspiration before us, and thanks to Amrita madam also for sharing her side of that incident. Thank you. So in a nutshell, when we talk about life skills, I think what exactly are the three important things जो हमको याद रखना पड़ेगा. I think we all know about it, but फिर भी आज के सेशन से this is the takeaway. सबसे पहले is the thinking skill. सुबह जब बातचीत शुरू हुआ, I think one of our esteemed professor उन्होंने बोला था कि I spend time thinking, and I think when we talk about thinking, we talk about problem solving, we talk about decision making skills and creative thinking. So when we look at all this, I think for the last almost 2 hours, 2.5 hours, we tried to solve a lot of problems, and may not be of a very high standard, but we tried to find out in terms of whose life story we saw just now, or maybe in the picture क्या क्या हमको दिखाई दिया, and then we gave our decision. So that is the first part, which is the thinking skill. हम जब स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, उधर भी हमको शायद उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, academic administrative problems. So that is part of our life skill. The second one, we talk about social skills, and I had apologized for not that great in my Hindi, but आपके cooperation से I never felt left out. मुझे ऐसा नहीं लगा कि I am out of the place. I tried to connect with you, and hopefully I'm really enriched. So it talks about, you see, interpersonal skill and effective communication. जैसे आपने आगे आए and you have shared your side of stories, experience and all. I think for the last almost 2.5 hours, close to 3 hours, it had been hopefully a very good kind of social skills that we have evident and we have experienced. The last incident or the life story of Arunima Sinha ji talked about both emotional skill, matlab how managing emotion and dealing with stress. And when something like that happened, God forbid to anybody of us out here, अगर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है, घटना दुर्घटना, so उसके बावजूद I think having that kind of a character, that kind of a personality, that kind of a attitude, and then achieving which maybe even it's very difficult to dream also. That talks about managing emotion and dealing with stress. I think with this part, I hope I can request you to tell me in the chat box once again. Kindly just check the chat box once again. Those who are able to see it, I think concept of life skills is clear to you. Kindly just check the chat box. मतलब जो तीनों हमने अभी आपको दिखाया, so about all those three things, I hope you can make use of the chat box and write yes, no, or maybe if you need further clarification that we can talk about, because हर किसी के जीवन में I think we need to now have the domain skill that you all are expert. I think whether it's from a little bit of history, whether we talk about a little bit of maybe Urdu, whether it's talk about any other branch of social science, then probably uske saath, I think life skills is becoming very important. So when we talk about life skills, this is what I think nice to get a few response in the chat box. I was talking about these three types of skills. One is a thinking skill, uske baad social skill and emotional skills with real life case studies, role playing and exercises. Life skills या जीवन कौशल होता क्या है? I think we all know. So this is defined as, you see, psychosocial ability for adaptive and positive behavior. We got enough positive vibes coming from Arunima Sinha ji, एक जो important होता है positive behavior का, which enable individuals to deal effectively with demands and challenges of everyday life. जो जीवन का हर दिन का जो एक चुनौतियां होते हैं, उससे कैसे आप
उभर के आगे निकलेंगे. So that is what I think what is life skills all about. It talks about always being positive. हम हमारे students को भी हमेशा बोलते रहते हैं please stay positive. I think a positive attitude really matters, and I think today I'm surrounded by a lot of positive people, and I think from your life story, little bit of experience sharing for the last almost close to 3 hours, वही हमको पता चला. So when we talk about life skills, प्लीज रिमेंबर इनको हम 3 ब्रॉड वेज में क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स फॉर एनालाइजिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन. हमने ये एक्चुअली प्रैक्टिस किया आज. इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस पॉइंट पहले हमने एक्चुअली वी वेंट थ्रू इट, हमने इसको एक्सपीरियंस किया. वी हैव एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन, वी हैव यूज्ड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस सेशन. सो इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स. And the next one we talk about is a personal skill for developing personal agency and managing oneself. So I think Vyaktigat, if I get it right, so that talks about personal skill. As an individual, I think each one of you at different times you have shared your points, you have thought about sharing your experiences in different contexts, whether it was about is there any shortcut to success. आपने हर किसी ने बोला है in a different sense, no, there are no shortcut to success. When I talked about falling in love, whether it was easy or staying in it requires work, from your experience आपने इसको justify किया है in your own way, and I think these are true things. The third one talks about interpersonal skills, पारस्परिक जो कौशल होता है for communicating and interacting effectively with others. In spite of the challenges and the constraint of the new normal, I think for the last 3 hours we all were together. ऐसा नहीं लगा मुझे कि we are at different places. ऐसा लगा कि we all are as if maybe connected in a particular place. And I think that is the best part of this when we have that kind of a lively audience. So I think parasparik kaushal is also a very important thing that we have experienced. According to World Health Organization, I will request you kindly just focus on this slide, please, as we are coming to the fag end of the session. So according to World Health Organization, उन्होंने क्या कहा है? So they have given us 5 basic areas of life skills. Sorry, excuse me, please. सबसे जो पहला है is decision making skill. I think often students try to get our advice, suggestions on this, which is called a decision making skill. So I will request all of you to kindly just talk about this. निर्णय लेने का जो skills, I think we have done it in the session. Creative kind of a thinking and critical thinking, I think that is also very important. I have seen a lot of people are very very creative. The way you have expressed yourself, आपने जैसे अपना ideas, आपका जो experience है आपने share किया है. Third one, we have already seen it, communication and interpersonal skills. So these are all coming from World Health Organization, what they have to say about life skills. Then we talk about self-awareness and empathy. Mind you, not sympathy. Sympathy एक अलग चीज होता है, but we are talking about सहानुभूति. We talk about आत्म जागरूकता and swaनुभूति. So that is there about self-awareness and empathy. And the last but not the least is coping with emotion and dealing with stress. When we talk about emotional turmoil of our students, and I think in many places we have to do the mentoring. मुझे पता है कि हर कोई, hopefully in your universities or in your institutes and all, you are also at times doing little bit of mentoring and counseling of students and all, and showing them the right approach in life. So these are points I think which we need to try and remember when we talk about this. And if after looking at this slide, I will expect you, अगर आपको लगता है कि I have given you a little bit of a tough time, so then the next slide which is going to be presented will be the second last one. अगर आपको लगता है कि any of this you are having, kindly check. Are you having any of this? Frequent headache or maybe a little bit of cold or sweaty hands and feet. अगर आपको कभी कभी आपके स्टूडेंट्स को, आपको मतलब आपके स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड शेयरिंग जे सर और मैम वी आर हैविंग दिस, सो और मे बी they are talking about little bit of stomach pain or frequent kind of a heartburn. Yes, kabhi kabhi exam ke pehle or maybe some kind of a interview ke pehle they are saying that we are getting some kind of a panic attack and all. और कोई बोल रहा है कि I am sleeping for too long, maybe
12-14 घंटा सोते रहते हैं, या मे बी दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 3-4 घंटा भी सो नहीं पाते ठीक से, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीपिंग, अगर ये हो रहा है कंप्लेन, सो प्लीज गाइड देम एंड आई थिंक वी डू इट. यू हैव टू बी केयरफुल. कभी कभी क्लास में भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है, लाइफ में भी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है, सो देन वी हैव टू ट्राई एंड guide them because silently you never know this is approaching, which is called stress. And I think when we talk about stress, a lot of times it might happen with our students, it can happen to us also. I think there comes a question of having the right work life balance. हम हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के है, उसके साथ अपना पर्सनल लाइफ भी ऑल्सो वी हैव टू बैलेंस. सो आई थिंक बैलेंसिंग बिटवीन फैमिली, आवर करियर, आवर लिटिल बिट ऑफ हेल्थ, पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब संतुलन बजाय रखना पड़ता है. सो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दिस विच इज कॉल्ड स्ट्रेस. And for academician, I think it is one of the very, very talked about topic, is having the right balance in our work life situation. And I think we all know, हम सबको पता है, and we all also practiced it, whether we talk about having a healthy kind of eating habit. We'll tell our students also जे आप थोड़ा अपने health के ऊपर ध्यान दीजिए. No substitute for regular exercise. We talk about maybe drinking of plenty of water, so that we can reduce the stress level also. So these are things, I think, slowly but steadily, I think, which is telling us that we need to take care about our life, and mostly after the pandemic, when we have gone through that and we are all getting back to our normal course of work. So I think the last part, I am putting it in a short in the chat box. Aapko concept of a work-life balance, if you are getting it, I'll request you in the chat box. Just check and please put your message. If you have got the concept of work-life balance, please write a yes in the chat box. अगर आपको पता चला, because we do it beautifully well. मुझे पता है हर कोई अब कर रहा है, but हमारे जो students हैं उनके लिए हमको उनको सही दिशा दिखाना है. So regarding the work-life balance, if we can get it, I can see a lot of positive response coming from Professor Vikash Kumar ji. I think Amrita ma'am is all throughout. Dr. Madhubala ma'am is there. Kundan sir has been giving us good company all throughout. Thank you, Professor Arun Kumar sir, Professor Bhavna Singh ma'am, Professor Mandal, Professor Anand is there. I think Professor Ashok Kumar sir, Professor Pandey. Thank you for your quick response. And I think when we talk about this, we will try and just have a look at the concept of work-life balance, because that is what we need to do it when we talk about Karya Santulan, aaj ke time pe. So I think we are doing it well in the presence of social media also. When we talk about it, work-life balance involves juggling of workplace stress with daily pressure of family, friends, and self. And I think a lot of students often come and look for suggestion, advice from us. How do we do this, balance our career aspiration जो होते हैं, उसके साथ expectation of the family, friends वगैरह, उनका जो peer pressure होता है. So this is what I think what is the need of the hour. We need to have the right kind of balance in our work and life. And I hope when they are surrounded by professors like you, they are getting एकदम सही जो उनको दिशा मार्गदर्शन आप दिखा रहे हैं, so they are getting it. So I think all in a good spirit, I'll try and say thank you to all of you, and we are right on time. I think end of the day, we are going to tell our students, you are the creator of your destiny. So it's up to you how you define your success. It's up to you whether you fall in love very easily or you want to stay in it. उसके लिए you want to work or want to maybe put effort, or maybe when we talk about how you do and balance your emotion and stress. So my email ID is there for anybody to try and connect with me. अगर I will love to connect with you all. अगर आपको लगता है कि किसी दिन आप you want to be in touch with me, I'll be more than honored and happy. So I think with this we come to the first part, matlab what all was required for that, and little bit of the mentoring part of it. So I will request all of you. I hope lunch is around the corner for all of you, so I'll not stretch it further. So I'm dropping
my mail ID for you. So kindly just check the chat box. I am putting it in the chat box for you. So I think I'll just put it in the chat box for everybody, and hopefully it's up to you now to try and use the next couple of minutes for your overall observation about how did you find the session. Over to you. Anything? I think I am open, and I'll appreciate. Let's go with Professor Amrita ma'am to start with, and then I think anybody can come and share your thoughts in whatever respect, please. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Very nice session, very energetic. We all enjoyed. I think I'm right, friends? Yes, ma'am, exactly. Agree. Thanks, sir. And the way you have taught us effective class management by managing the class so nicely and involving each one of us was marvelous. Thanks a lot for that. I think when we have lovely audience, I'll not say students, I think job of the other person becomes very easy, and I never felt left out because मेरा हिंदी जैसे आपको पता चल गया कि maybe it's not up to the mark, तो फिर भी I think you never gave the impression that maybe I am not. मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। हाँ हाँ जरूर बोलिए प्लीज। I think yes, Professor Paswan, बोलिए प्लीज। জি আপনার হিন্দিটা অত ভালো যেহেতু আমার বাংলা নেই, আপনার হিন্দি অনেক ভালো, আর আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অনেক প্রতিভাগীতে হৃদয় জিতেছেন। सर मैं यही कहूंगा कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी है जितनी हमारी बांग्ला नहीं है, और हम सभी प्रतिभागियों का आज निश्चित रूप से आपने दिल जीता है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। Thank you. Yes, sir. It was a brainstorming session, sir. One of the most lively sessions. Yes, sir. Also inspiring and participating session, sir. और आपके सारे presentations दारुण लागे। Thank you very much, and I think आप सभी का मैं बहुत आभारी कि you gave me the opportunity. लास्ट में एक शेर कहना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए सर, वो तो ड्यू था कुंदन सर, बोलिए। सर अब तक सुना था एक शेर कि सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। ये शेर को आपने बदल दिया सर। हमारी नजरों में भी आप थे और आपकी नजरों में भी हम सभी थे सर। आज पहली बार देखा कि साकी की नजर भी सब पे थी सर। इंशाल्लाह क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर for that. Thank you sir. I have to propose a formal vote of thanks, sir. हाँ सर प्लीज सर एक मिनट, अगर ये सेशन सर पूरे दिन चलता तो वी लव टू इस सेशन को हम लोग बिल्कुल वो करते, तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक आई हैव ड्रॉप्ड माय मेल आईडी। किसी दिन कहीं पे भी आप बुला लीजिए, आई विल बी ऑनर्ड टू बी विद यू ऑल अगेन एनीवेयर। सर बहुत ही क्रिएटिव रहा है सर। इस सभा में मैं कहना चाहूंगा कि सहज तरीके से रखा गया है सर, इसके लिए कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। इस सभा में ही मैं कहना चाहूंगा मैं अपने डायरेक्टर महोदय से कि सर का और एक सेशन, कम से कम एक और सेशन हमारे इस कोर्स वर्क के दौरान हो और मिले तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जरूर अगर मौका मिले जरूर। बिल्कुल बहुत अच्छा। थैंक यू सर। Today was the 13th day. Sorry. Today was the 13th day और शायद पहली बार हमने एक दूसरे की आवाज सुनी है सभी की। The way sir has done it. मेरा तो यही सिर्फ उद्देश्य रहता है कि आई गेट टू मीट एंड एक्सचेंज आइडियाज, इसीलिए व्हेन आई थिंक रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर सर दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, I said that I love to make it an interactive one, and it's because of you. आप सभी के maybe cooperation से it actually became reality. So thank you so much, and I think it is really an absolute honor. Sir, I have a question, sir. हाँ बोलिए मैम प्लीज। सर आपका सेशन तो बहुत लाइवली था, बहुत इंटरैक्टिव था, बहुत एंथुजियास्टिक था, हम लोग को बहुत कुछ लर्न करने को मिला, और सर आप बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर,
जो मेरे माइंड में बहुत आता है कि सर आई एम सेटिस्फाइड विथ माई जॉब, मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। सर बट कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है जो थोड़ा शायद कम होता तो अच्छा होता। लेकिन सर सेटिस्फाइड हूँ सर, लेकिन कभी कभी लगता है शुड आई प्रोग्रेस मोर, मतलब प्रोग्रेस इन द सेंस फॉर मेकिंग मनी, should I do something else or should I try something else or I should be continuing this job only for entire life, what should I do? Matlab, I want you to throw some light on this behalf, sir. मैम आई थिंक आई अंडरस्टैंड आप बोले। एक सवाल मेरा है सर। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए प्लीज। हाँ, जो हम बनना चाहते थे सर वो नहीं बने, जो नहीं बनना चाहते थे सर वो बन गए। एकदम सही, आई थिंक एब्सोल्युटली ट्रू सर, प्रोफेसर प्रभाकर। सो आई थिंक मे नॉट बी अ वेरी इजी आंसर, जैसे आप पूछ रहे थे। आई ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल एंड एज यू सेड, मतलब not that everybody need to believe in it, but I read somewhere and maybe not from academic world that if you are good at something, money will follow. So don't think about other things which are beyond your control, but please focus on something which is in your control. So I think what we can do is things which are in our control and maybe leave it to the rest. So that is I think you see aaj jo practically, honestly, since you asked ma'am, I'm sharing, मुझे अभी लग रहा है कि as if we knew each other for long, because last 3 hours the way you have accepted me, what I did from my side, मुझे पता ही नहीं था। I think सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ respected director sir को, Dr. Pandey and Dr. Deputy Director sir Dr. Alam को, because they gave me this platform, this opportunity। ये नहीं मिलता तो मुझे तो इतने सारे गुणी जन के साथ बातचीत करना, समय बिताना नहीं मुमकिन होता। So what I did is my preparation, and the rest I think I leave it to how things are going to happen. So I think you are the best people to judge or maybe give me suggestion for further improvement. So I look at it in that sense, I give importance to the preparation part. I keep telling my students also, and like you people also, I believe आप भी करते रहेंगे, आप अपना students को हमेशा यही बोलते रहते हैं कि please prepare well, and then things will follow, so that you cannot control. So that is what I can say ma'am, आप जो कर रहे हैं सच्चे दिल से कीजिए, I think the rest will follow, ठीक है? So कभी ना कभी wherever we are going to meet again, hopefully then you will realize that. Thank you so much ma'am for that. Thank you sir, thank you again sir, thank you again sir. Thanks sir. Thank you sir. Thank you. And the new normal, so I think online, that is a positive, I think हर जगह से we can be connected. So my mail ID is there, and I think I'll be really honored अगर किसी दिन मौका मिले to again connect with all of you. Yes. सर मोबाइल नंबर डाल दीजिए सर चैट बॉक्स में, सर मोबाइल नंबर। सर आप अच्छों में अच्छे हैं, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। मोबाइल नंबर दे दीजिए प्लीज सर चैट बॉक्स में। आज सर सभी के चेहरे से मतलब जो है चेहरे पे आया हुआ सर। I have to propose formal vote of thanks. Yes, please sir, बोलिए। Thank you so much. Since this session has already brought us very close, all of us, I will not introduce myself. So this session has been highly interactive, highly absorbing, engaging, enriching, everything. So really it has been a learning, great learning for us. Communication always being, if it is a two-way process, it is far more effective. And everyone, all my friends, participant friends will agree with what I am saying. So really a very informative, highly handy, useful session with us, in which you focused on different life skills, cognitive skills, social skills, emotional skills, and how to balance our professional life with our social life, family life. This has been a really lifelong learning for us. It's a lifetime moment for us interacting with you, sir. So thank you very much. On behalf of all my participant friends, I express my sincere gratitude and pay sincere thanks to you, sir. Very nice to have you, sir, with all of us. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने
डायरेक्टर सर को, डिप्टी डायरेक्टर सर को और पूरी जो हमारी टेक्निकल टीम है HRDC सेंटर पटना यूनिवर्सिटी का, थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, सबको थैंक यू वेरी मच। I have one grievance sir। हाँ हाँ बोलिए सर प्लीज। मेरी एक शिकायत है सर। हाँ। ये वक्त रुक गया सर, मेरी घड़ी 10:30 पे बंद हो गई सर। आप आए, मेरी घड़ी बंद हो गई सर। ये वक्त तो बीता ही नहीं सर, ये वक्त रुक गया सर। यही शिकायत है कि आपने वक्त को ही रोक दिया सर। Thank you so much sir, so nice way of I think genuine kind of I think respect, mutual respect, that's why I honestly put up the first slide। ये सचमुच में आप जब इतने गुणी लोगों के बीच में हो, so I think it's really, some of you are really ended to me। I'll really request you to please keep blessings those who are maybe my age group, my colleagues, all our good wishes, and maybe one or two people who are a little bit younger, I think please take my good wishes in your future career and life in general। Thank you so much, and please मेरा धन्यवाद convey कर दीजिए sir, to respected director sir, and to deputy director sir, and the entire team at Patna University HRDC। And I think कभी अगर मौका मिले दोबारा तो we will connect at different platform and different places। सर दोबारा एक क्लास हम लोगों को लेंगे सर, दोबारा एक सेशन हम लोगों को लेंगे। और सर देखते हैं जरूर, अगर डायरेक्टर सर थिंक्स वी हैव टाइम, डेफिनेटली विल लव टू कम। थैंक यू सो मच। आप सब स्टे सेफ एंड स्टे आई थिंक वेल इन द न्यू नॉर्मल। थैंक यू सो मच, एंड आई टेक योर परमिशन। थैंक यू सो मच सर। सब खुश रहिए एंड एंजॉय लाइफ। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच। If we can turn on the video, I'll be able to take a screenshot जो अगर possible है जिसका, so you can turn on the video and we can just take maybe a screenshot of all of us together। जिसको अगर कुछ तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं है, so you can be on screen with your video on, and then we can quickly have it। जल्दी कर लीजिए please, so that I think you have another session I believe post lunch na, so kindly just yes, I can see some of you are already on screen, so kindly just turn it on and we will do it। I think yes, some of us are there on screen। I'll just see if we can get it। Just a second please। Thank you so much, and I take your leave and permission, and it was wonderful आप सबसे मिलके अच्छा लगा, and I hope we had a good time together। Thank you so much, and stay safe and stay well। Thank you very much sir। Thank you sir। Thank you sir। किसी दिन कलकत्ता आएंगे तो प्लीज इंटीमेशन, वी विल वेलकम यू। कलकत्ता आके मिलेंगे सर आपसे। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। और आपको भी बिहार बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक